Hello, Abhishiekh sir. Hello, good evening, Viraj sir. How are you? So, sir, first reactions with respect to paper? Uh, like always, it was a bit tough on the outset. Definitely not a very easy paper, but doable. Doable if the anxiety attack does not happen by looking at first few questions. Then it was doable. So many students have joined us. So first of all, let me welcome you all to IAS Pass. Today, me and Viraj sir are going to decipher the UPSC CSE Prelims 2026 paper for all of you, and we are going to take up your queries as well. You can write in your queries in the chat section of the YouTube. We have kept this session on YouTube so that maximum of the people can join without any registration or formalities, and they can ask their queries. As far as the reactions that I have got uh, from students, yes, it was tough, but it was doable, right? Something that I am glad about is that PubAd somehow sneaked it into the prelims, probably after more than 2 decades. Not 2 decades, 1.5 decade. Uh, so important development. Cinema has been touched upon this time by the UPSC. There was a question regarding BAFTA, right? Right. And Right. that is something to look forward to. That is a challenge in terms of what to cover. As far as the creeping in of public administration is concerned with the prelims, I always say that it is one of the most relevant subjects for the examination, because that is what an administrator would end up doing. Whether you join IAS, IPS, IFS, IRS, or whatever service, administration is something that you will have to do. Okay, that is the bread and butter of UPSC, and all those rumors, ऑप्शनल हट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा, कुछ भी हटेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन will remain. Right. Right. Okay, so it is a womb to tomb concept that will remain. Now, coming to the prelims, we have Viraj sir with us. So, sir, what are your thoughts about the prelims? By the way, on our Telegram group, we have shared a detailed analysis document Right. with solution and everything. So, sir, why don't you take over and start when it comes to the reactions on the paper, and tell a bit more about the solution and analysis document and what different we are doing, because answer key is not something that is going to remain a secret for long, since Mhm. UPSC has announced that it is going to come up, at a far quicker rate, and the Mhm. students will not have to wait for a year or more Mhm. for answer keys. So, your reaction, sir. Over to you. Uh, what what can I say, sir? डर का माहौल है और बहुत जबरदस्त डर का माहौल है. What I feel is, uh, I have said this many times. The best time to write prelims was my time from 11 to 16, because the way in which questions were asked, that was predictable. The content on which questions will be asked, that was predictable. Now predictability has gone out of the window. You cannot predict anything means anything. कोई चीज आप predict कर ही नहीं सकते. जो चीजें जिसने predict की थी, including me, UPSC has just told us to shut up, frankly speaking. ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे. कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट विल रिमेन रेलेवेंट. वो इस पेपर में भी रिलेवेंट है, आगे के पेपर्स में भी रिलेवेंट होगा. मेथड, स्ट्रेटेजी, ये वो, अब ये सब चीजें है ना, उतना मायने नहीं रखेगी जब तक आप जो है पेपर को एनालाइज करते हुए अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में नहीं रख सकते. फर्स्ट थिंग इज दैट. Second thing, what I will say is, those students who have limited their attempts in this particular examination, ना आज के examination में, who have limited their attempt, they have a better chance of passing. एक चीज होती है ना अभिषेक सर, what I will say is, हम लोग बाहर बैठे हैं, we, for us paper tends to be a bit easy. जिस जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होता उसके लिए पेपर थोड़ा सा इजी हमेशा होता है.
Definitely, definitely. If I take it from the point of view of those students who were writing the exam today, it was a surprise for them. It was a bit, मतलब ऐसा हुआ होगा कि उनको लगा होगा कि earthquake आ रहा है, ठीक है. So in that case, what students do is they panic and they attempt more than it is necessary. तो यहाँ पे जिसने अटेम्प्ट को कंट्रोल में रखा वो अच्छी तरह से निकल जाएगा आगे. एंड लास्ट थिंग, एक्सपेक्ट द सेम थिंग्स टू बी द पार्ट ऑफ प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. कोई प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग नहीं जा सकते अभी. वी कैन नॉट प्रिज्यूम कि सो एंड सो सेक्शंस, सो एंड सो एरियाज विल बी द वंस जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे. अभी हमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यूपीएससी सिलेबस एंड कॉन्सेप्ट्स इन दो सिलेबस ना उनको फोकस करते हुए आगे बढ़ना होगा. एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज. तो मेहनत स्टूडेंट्स की भी बढ़ गई और मेहनत हमारी भी बढ़ गई. तभी तभी that is why if you see the analysis document, and I want to make it a point, right, that if you look at that analysis document, that is not a conventional solution that is provided by all and sundry, right? We have made it a point that in every question, the syllabus angle, the logic, and most importantly, the concept has been flagged against each question. सर एक और चीज है ना, जैसे what I did see is books that provide you facts and reasons for those facts have become relevant again. Unfortunately, for some years what had happened was students were relying on notes, and I'm not against notes as such, लेकिन नोट्स क्या करते हैं ना, आपकी कॉन्सेप्ट को ग्राउंड नहीं करते. They will tell you about the facts, but they will not tell you why those facts have occurred. For example, in history, the way in which questions have been asked, भाई साहब आप कर ही नहीं सकते without deep learning. Without deep learning, you cannot answer those questions. Precisely. The difference between prelims and mains, मतलब एक thought process था ना, prelims is about facts, mains is about concept. That has again वो कम हो रहा है, वो difference कम हुआ वापस से इस पेपर. And I believe that's a very healthy development, because this is a single exam for propaganda's sake, and for many other things. Unnecessarily हम इसको divide कर देते हैं between prelims and mains and personality test, or popularly known as interview. But the learning is one. अगर हम polity पढ़ रहे हैं, fundamental rights if we are studying, and those fundamental rights are equally important for prelims and mains. It's one concept. Right. So deep conceptual learning, static areas. If you will see, friends who are watching this, if you will see the document, you will find that we have taken care of those static aspects as well in the document, and we have flagged that how people who stuck to basics actually would have sailed through even this not so rosy exam or not so rosy paper. And students who did their prelims preparation simultaneously with mains had an edge in today's paper. They basically had an edge in today's paper. NCRTs again showed their relevance in today's paper, especially when it came to culture. Absolutely. And why this? I want to make it a point here, sir. If you will see again, I will fall back to the analysis document that we have shared. Friends, if you will see maximum sources, I have, we have sort of put down the references, exact references, web references. And those are not coaching references, by the way. Okay. So we have tried to put PIB, we have tried to put NIOS references, which is like NCRT stuff. Okay. So you will find that the basics have not lost their relevance at all. Rather, it is the UPSC's attempt कि marketing और जो propaganda और ये सब जो चलता है, that is irrelevant. Hardcore study on concepts, and hardcore conceptual teaching. Not like South Indian movie stars and things like that will work there. Some students are saying Lakshmikant से नहीं होगा. Lakshmikant से होगा भी नहीं. अगर prelims होता था तो mains नहीं होता था. Lakshmikant is not good enough for this examination. As the exam is evolving, the importance of Lakshmikant, what we have seen is वो decline होते जा रहा है और आगे भी शायद होगा. Not only Lakshmikant, if I may say so, spectrum भी अभी relevant नहीं होगा.
हाँ, ठीक है, स्पेक्ट्रम भी रेलेवेंट नहीं रहेगा उतना। आपको राइट, बिपिन राइट। चंद्रा या फिर सतीश बंडोपाध्याय प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ना पड़ेगा। एंड सर, कल्चर कल्चर अगेन वाज यस। एन एरिया व्हिच वाज आस्क्ड, हम्म। हम्म। आर्ट एंड कल्चर दैट वाज वेरी ऑब्सक्योर। राइट सर, राइट। तो बच्चों, अगर मतलब दोज हु आर राइटिंग नेक्स्ट ईयर, प्लीज 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 नोट इट कि प्रीलिम्स में कोई शॉर्टकट नहीं होगा। पहले भी नहीं होता था, लेकिन अभी यूपीएससी हैज मेड श्योर कि दे आर कन्वेइंग योर मैसेज। वन मोर थिंग, दो स्टूडेंट्स हु मस्ट, मतलब स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू आंसर कीज, दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कोरिंग दैट वेल, मतलब पिछले साल कट ऑफ वाज इन अपर 90s, तो जिसके 90s में नहीं आ रहे हैं, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड। अभी रिजल्ट नहीं आया है, एंड द वे इन विच द पेपर वॉज, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कट ऑफ नीचे जाएगा। तो मैं अभी से ये क्यों बोल रहा हूँ, रीजन फॉर दैट इज, बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मेरा लाइफ खत्म हो गया और मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, सर अभी मैं क्या करूं, छोले भटूरे बनाने के लिए रेडी लगाऊं या फिर बूट पॉलिश करूं। अरे भाई कुछ मत कर, शांत रहे, ठीक है, वेट फॉर द रिजल्ट। इन सच टाइप ऑफ पेपर ना, यू डू नॉट नो कि कट ऑफ कहाँ तक जाके पहुंचेगा, यू डू नॉट नो। ठीक है, 2023 इज एन एग्जांपल, वी वर सरप्राइज्ड। ठीक है, उस साल किसी ने सोचा था यूपीएससी का कट ऑफ 75 जाएगा, लेकिन उस साल चला गया ना। यू डू नॉट नो कि कट ऑफ कहाँ जाके रुकेगा। सो इफ यू हैव वर्क हार्ड, अगर पेपर ठीक ठाक दिया है, ठीक है, इफ यू आर क्रॉसिंग 75, 70-75 अगर आप क्रॉस कर रहे हो, 75 अगर क्रॉस कर रहे हो, तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट यू आर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, यू आर क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, प्रीलिम्स वाला एग्जाम आपका क्लियर हो रहा है। तो स्टे काम। रिजल्ट वैसे भी, लुकिंग एट द टाइम डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड विद इन आई वुड से 1 वीक्स टाइम। ठीक है, तो वेट फॉर 1 वीक एंड देन टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू योर फ्यूचर करियर ऑप्शंस। Right. And, just to drive home the point, see, today you have given prelims. Hmm. Okay, Hmm. friends. So just go back, Hmm. relax, Unwind. eat, sleep, Right. unwind. Okay. Right. And there are other things which obviously we are not saying. You नहीं can नहीं, do आई that. कैन से, लेकिन ठीक है सर। So the point is that, go Hmm. chill. Okay, Hmm. and from tomorrow onwards, think हाँ, that you are writing mains. and राइट। and jokes apart, sir, I want to drive home a point here, that there are barely 80 days between, today obviously has almost ended, Hmm. and the mains exam is barely in 80 days. The result is going to be out within next fortnight, within next 15 days or so, as we have been looking at the trends for past few years, that the result comes out in a couple of weeks. Hmm. So don't lose these couple of weeks, Right. because many a times you think, oh, I will join a test series after the result. Hmm. After the result, if you're going to join the test series, 15 70 days Right. 17 Right. days are gone. The Right. momentum has lost. So Hmm. today, don't do anything. Tomorrow, get up and get back to business. I Right. am sorry, you are a candidate for UPSC Civil Services examination. Rest is not a word for you, which you can take and take solace in for a very long time. Today it is understandable, some of you are also traveling from Hmm. one place to other, Right. you Right. must have gone to give the examination, etc. But the point is, from tomorrow, plan, because you have barely 80 days between, and you have to do GS 1 2 3 4, Hmm. essay, your optional. Hmm. Okay, so this planning of road ahead is very important. See, most of the people, those who are doing extremely bad, okay, in this examination, I'm just postulating the scenarios here, friends. Those of you who are doing extremely bad, okay, your goal is clear, you are preparing for 2027. Hmm. Those of you who are pretty confident that, okay, I'm crossing 100 or so, right, and I'm going to write, then also it is pretty clear. For Right. those of you who are in the borderline scenario, Hmm. they are the ones who are most Right. troubled. Right. Okay, but think that you are writing mains unless you are absolutely sure you are not writing mains. So go by the principle of exception here. Hmm. Okay, and start hitting the road from tomorrow, Right. because time and tide waits for none, None. as the saying goes. So समय निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, 15 दिन बाद आप कुछ शुरू करोगे, कुछ ज्वाइन करोगे, तो आप ऑलरेडी 20 दिन लेट हो। Hmm. ठीक है, और अगर ये प्रीलिम्स निकला है, तो Hmm. यू आर वेस्टिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर मेंस।
राइट। Okay, जस्ट so रिमेम्बर कि अगले साल कैसा पेपर आ सकता है वो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, तो इसी बार निकालना है, थ्रू एंड थ्रू निकालना है। ठीक है। डू नॉट कंसिडर दिस कि इस साल प्रीलिम्स निकल रहा है तो अगले साल भी निकल ही जाएगा, ये साल मैं मेंस ट्रायल में देता हूँ, अगले साल के प्रीलिम्स की भी कोई गारंटी नहीं है। कोई वी आर गारंटी नहीं नॉट है, वी कोई आर गारंटी नॉट इन नहीं है। दैट एरा। जैसे मेरे टाइम पे ये हुआ करता था कि एक बार प्रीलिम्स निकाल दिया मतलब यू कैन नेवर फेल इन प्रीलिम्स। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाता था कि व्हाट यूपीएससी, द वे इन विच यूपीएससी सेट्स द पेपर। अब वो चीज नहीं रहा। अदर देन कॉन्सेप्ट्स नथिंग इज परमानेंट नाउ। Also, for the benefit of our friends, those who are joining, I am sharing a link in the chat section. Okay, this link is for a session that we are going to hold tomorrow, same time at the 7 o'clock. At 7 o'clock, but this is going to be a closed session where me and Viraj sir are going to guide you personally on your mains roadmap, or what is राइट। your roadmap going ahead for राइट। the next 30 days, because those days are very, very crucial. So you would have seen the link. Okay. चांदनी इज राइटिंग कि आई एम नॉट श्योर if I am clearing. Nobody is sure. Nobody's Nobody in sure. such in Trust me, such type nobody's of sure. paper, in such type of paper ना nobody is sure चांदनी। ठीक है। 2023 again I might remind you all, 75 was the cut off। ठीक है, 75। एंड मैं और अभिषेक सर जिस एरा से आते हैं, अभिषेक सर तो खैर मेरे मतलब एज में जूनियर है मुझसे, लेकिन मैं जिस एरा में आता हूँ ना वहां पे 100 वॉज कंसिडर कि 100 के नीचे अगर आता है तो आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो प्रीलिम्स। मैं उस एरा से आता हूँ, राइट। फॉर मी टू इमेजिन 75, एंड अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों की क्वालिटी खराब हो गई थी, पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था 23 में। ऑलराइट, तो इफ 70 80 कैन बी अ कट ऑफ, कैन बी द कट ऑफ ना, आई एक्सपेक्ट द सेम सिनेरियो टू बी दिस ईयर। तो डोंट बी डिसहार्टेंड। यू आर Right. नॉट श्योर, कोई बात नहीं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस If एग्जामिनेशन। मैं if you सीरियसली are बोल रहा हूँ, स्टार्ट if you are प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस scoring if एग्जामिनेशन। you are scoring in the vicinity of 80, या तो आप 70 से नीचे हैं, हाँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। then it's a seal deal that you are राइट। not writing for राइट। राइट। the 2026 mains for all probable हम्म। scenarios. हम्म। But if you are in the vicinity of 80s, hit the road running, ये 15-20 दिन वापस नहीं आएंगे. These days are not going to come back. ओके। Okay, वन so स्टूडेंट for इज those who राइटिंग are asking पैटर्न चेंज कंप्लीटली हुआ है पैटर्न चेंज इन द सेंस the pattern of यूपीएससी। questions. हाँ, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, एंड यूपीएससी इन दैट वे इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि आप उसे प्रेडिक्ट कर लो। ठीक है। तो बहुत से वीडियोस वगैरह बने थे, मैं देख रहा था उन्हें, कि अगर 6 स्टेटमेंट आते हैं तो ओनली फोर हमेशा राइट होता है। ठीक है। तो अब उस सब का कोई मतलब नहीं रहा। It उस टाइप के continues to क्वेश्चन ही be नहीं है। the unpredictable द service commission. द क्वेश्चंस Elimination is dead. राइट, द क्वेश्चन जिसका सबसे ज्यादा डर था बच्चों को, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग, दोस क्वेश्चंस डिड नॉट कम ऑन। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस तो आए ही नहीं जिससे सबसे ज्यादा डर था। अच्छा, वन So, ऑफ आवर स्टूडेंट्स so, हैज so व्हाट्सएप टू मी, some जो आपकी भी स्टूडेंट है पबेड की सर, वो लिख रही है कि यूपीएससी ने किसी बात का तो बदला लिया है। नहीं, the point here is somebody is asking कि आगे क्या करना है, what should be the roadmap ahead. So for precisely that, I've shared the link. Just राइट। register. We'll talk tomorrow on this. Okay, today we do not want to burden you with so much, personalized roadmap. Tomorrow we are going to provide personalized roadmap to each and बिल्कुल। every student listening on their them. नीलम Okay. बोल रही है सर कट ऑफ कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल कम कम जाएगा, रहेगा। बिल्कुल कम जाएगा बिल्कुल कट कम ऑफ। रहेगा। सो जो कट ऑफ है, कट ऑफ इस बार, लाइक आई सेड, इफ यू आर इन द विसिनिटी ऑफ 80, based on obviously experience, we are in the business of preparing for this examination, not predicting the examination, but with our experience we can say that if we are in the vicinity of 80, then we have a fair chance, fair राइट। shot at the mains examination. So now, enough talk about the examination. Let us come to the discussion on the keys, as far as the solutions, and more importantly, not what the correct option is, just but how it is correct. राइट। Okay, राइट। so we'll be doing this in a block of 10 questions each. Okay, we are going by set D. Set D. D for Delhi. राइट। Okay. Others can match their questions. Okay, whatever set they got, so they can do that.
So, sir, shall we start Yes, with yes, this? yes, yes, yes. All right. Okay. So, Viraj sir So will be starting this. I'll be in a supporting role as far as this analysis are concerned, because he's correct. going to be a So lead more or faculty less for what we'll prelims. be doing is students, जहाँ पे कम बुद्धि वाले सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आई विल टेक केयर ऑफ देम. जो ज्यादा बुद्धि वाले क्वेश्चंस सब्जेक्ट्स है, साइंस, इकोलॉजी, वो सर देखेंगे. ठीक है, मोर और लेस दैट इज व्हाट वी विल डू. ऑल राइट सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड Sure, सो sir. दैट वी कैन. ऑल राइट, ठीक है. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इज फ्रॉम, मतलब एक ये है ना, व्हाट दिस क्वेश्चन डज इज, ये कन्वर्ज कर रहा है दो एरियाज को, एक तरह से एंशियंट इंडिया और दूसरा है ज्योग्राफी को. ऑल राइट. सो इन दिस क्वेश्चन ना, इफ यू लुक एट इट, तो वो पूछ रहे हैं कि इन द पीरियड आइदर यमुना वंस फ्लोड इनटू इंडस और सतलज फ्लोड इनटू यमुना and one major tributary of the either had shifted from Ganga to the Indus or vice versa. ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन समझना ही, ये सेंटेंस समझना ही अपने आप में एक चैलेंज है. ऑलराइट, आई कंप्लीटली गेट इट. एंड देन दे आर आस्किंग अस कि ऑन व्हाट बेसिस दिस कैन बी असर्टेड. ऑलराइट, ऑन व्हाट बेसिस दिस कैन बी असर्टेड. फर्स्ट इज ऋग्वेदा. ठीक है, देखो, इफ वी लुक एट द टाइमलाइन between the period that they are stating over here and Rig Veda, na, there is a difference of around 10,000 years. More or less, that should be known. ठीक है, that should be known. So Rig Veda cannot be the answer. Rig Veda basically cannot be the answer. Second is second is exploration of Satluj and Yamuna by Robert Fort. Robert Bruce Fort. ठीक है, अब रॉबर्ट बूट, जब भी यूपीएससी, मतलब दिस इज वन ऑफ द थिंग्स ना दैट हैज रिमेन्ड, जब भी यूपीएससी किसी इंसान का नाम लेके आपको पूछ रहा है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में, दिस यूज्ड टू हैपन बिफोर 2009 गाइस. अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे कुछ सालों से. दैट इज व्हाई व्हाट आई ऑलवेज से इज, जब क्वेश्चन एनालिसिस करो ना, तो 1995 से लेके अब तक के करो. एक टाइम था जब ऐसे क्वेश्चंस आते थे. At that point of time, when they used to ask in a statement about a particular person, not that well-known person, and his invention or some things like that, na, that statement majorly will be wrong. That statement majorly will be wrong. All right. So second statement in that way is not correct. All right. Third statement, presence of same species of dolphins in both Indus and Ganga river system. Now this is the only statement that remains. So obviously third statement is the right answer. यहाँ पे I eliminated on the basis of first and foremost, पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट था, I eliminated it on the basis of common sense. ठीक है, बेसिकली कॉमन सेंस. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट आई एलिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी एंड द वे इन विच वो क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं या स्टेटमेंट्स को फॉर्म करते हैं. एंड आई केम टू द कंक्लूजन दैट डी विल बी द आंसर. आई केम टू द कंक्लूजन दैट डी विल बी द आंसर. If I take into consideration the second question, what does an empty seat represent? What does an empty seat represent in early Buddhist iconography? Again, यहाँ पे ना, if you imagine Buddha, if you basically imagine Gautam Buddha, the first image that comes to mind is of Gautam Buddha meditating. Alright, बाकी तीन के बारे में अपने को नहीं पता है. Alright, बाकी तीन images ना हमारे सामने नहीं आती. So the first has to be the right answer. Whenever we imagine Lord Buddha, this is the thing that comes to our mind, meditation. So if I was the student, I would have gone with meditation. I would go with meditation. All right. If I move to the next question, this question is from NCRT. This question basically is from NCRT, directly from NCRT it has been asked. And which NCRT is it? It is not history ka NCRT, it is geography ka NCRT. Geography के NCRT में ना modern names of the rivers are given with ancient names of the river. ठीक है, तो यहाँ पे because it is a very factual question, तो यहाँ पे the answer is C3 only. All right. So NCRT के किसी कॉर्नर से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, ये याद रखना.
and if I may say so, this question was asked by us in our test series. तो चलो मतलब I can take pride in the fact that ये question मैंने test series में पूछा था. All right. Sir, Moving ahead. sir, in the test series as well, and the point here is that this time UPSC, as we were discussing when the Hmm. paper was out, Hmm. that UPSC has made the incorrect statements easy Yes, yes, to yes, 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 identify. yes, Just that point, a yes. bit more. I was coming to that point. Abhishek sir ने बिल्कुल सही बोला है. While we were analyzing the paper, now what we noticed was कि यूपीएससी what it has done is this time ना it has made incorrect statements easy and correct statement it has made specific and difficult to, I will say, difficult to decode. ठीक है. And that was one of the ways in which you could get to the correct option, I will say. क्योंकि वो ओपनली बता रहे हैं कि क्या गलत है, एंड यू आर गेटिंग होल्ड ऑफ दैट ऑल्सो, बट यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद रिस्पेक्ट टू द करेक्ट स्टेटमेंट. अब करेक्ट स्टेटमेंट इतना स्पेसिफिक पूछा है ना कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका आंसर क्या हो सकता है, वो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है. तो यूपीएससी हैज प्लेड इन दैट वे इस साल. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई मे टेक अप. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर्स. फ्रेंकली स्पीकिंग, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर्स. देखो, अमरावती हैज बीन इन न्यूज. Amravati has been in news because of it being converted into the capital of Andhra Pradesh. And because Amravati has been in news now, there were numerous articles on the history of Amravati, and in the history of Amravati, in many editorials, many articles, what we saw is Amravati School of Art. ठीक है. Amravati School of Art, how Amravati School influenced Buddhist thinking, how Buddhist thinking was influenced by Amravati School, everything. All right. So in that way, ना, this particular question is a question of current affairs. हम लोगों ने उसको अगर नहीं पकड़ा है तो हमारी गलती है. ठीक है. वैसे मैंने स्टूडेंट्स को बोला था, मतलब those students who were associated with us, because Amravati is so much in news, there is so much of fight over it. ठीक है. One thing about Amravati that is special is Amravati School of Art. ठीक है. तो this can be a potential question. Amravati School can be a potential question. तो if I look at this particular question ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा एक गलत स्टेटमेंट है. इन इंडिया इट इज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा इन साइज. इट इज नॉट करेक्ट. अमरावती का जो स्तूपा है सांची से एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ा है. ठीक है. एंड इट वाज समथिंग व्हिच वाज रेगुलरली रिटन डाउन इन एडिटोरियल्स, इफ नॉट द न्यूज आर्टिकल्स एज सच, तो इन एडिटोरियल्स, क्योंकि एडिटोरियल्स बार बार अमरावती की कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे थे, स्पेशली द हिंदू. ठीक है, स्पेशली द हिंदू. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द करेक्ट आंसर विल बी 1 and 3, बी. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज स्पेशल. ये क्वेश्चन मुझे पसंद है. यू नो व्हाई? बिकॉज हम लोग जब बोलते हैं ना कि संगम के बारे में पढ़ो या ऋग्वेदा के बारे में पढ़ो, बच्चे पढ़ के भी नहीं पढ़ते. ऑलराइट, बच्चे पढ़ के भी नहीं पढ़ते. नाउ दिस क्वेश्चन व्हाई इट इज स्पेशल? कोई भी संगम लिटरेचर के बारे में अगर आप थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे ना, यू विल कम टू नो अबाउट द किंग जो है who is in statement number 2, उदयन. सर, नाउ ये ठीक है. संगम लिटरेचर एंड जैनिज्म बुद्धिज्म मेकिंग अ बिग कमबैक, राइट ये मतलब 2016 2017 वाला एरा नहीं लग रहा आपको? राइट राइट राइट, बिल्कुल. और सर अगर आप इसको देखें ना, तो ये ऊपर से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा, राइट. लेकिन संगम के बारे में जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक मटेरियल्स में अवेलेबल है, बी इट इग्नू नोट्स, बी इट एनसीईआरटीज, ठीक है, वी नो वन ऑफ द फोकसेस ऑफ संगम वाज उदयन. ठीक राइट. है. राइट. एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि उदयन is from Chera dynasty. It has been stated in almost all the contents on Sangam कि उदयन इज फ्रॉम चेरा डायनेस्टी. अब इसको देखिए, अगर संगम के बारे में किसी ने 5 मिनट आराम से पढ़ा होगा ना, तो उदयन को पकड़ेगा चेरा में. ठीक है. उससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही नहीं बाकी है. 2 other kings ना, that they are also mentioned but not to an extent. Udayan plays a big role in संगम लिटरेचर, right, in Tamil history. ठीक है. तो इन दैट वे ना, एसोसिएटिंग हिम विथ चेरास वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. Connecting him with Chera dynasty was not that difficult. All right. Right. So second is incorrect. Rest of the 2 are correct here. Okay.
दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन है ना, आप आंसर कर सकते हो अगर आपने या तो बिपिन चंद्रा पढ़ा है या तो फिर सतीश बंदोपाध्याय पढ़ा है. आप नोट से इन क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते. ठीक है. यू कैन नॉट ऑल्सो आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉपुलर बुक जो मुझे इतना पसंद कभी था नहीं, बिकॉज हिस्ट्री कैन नॉट बी रेड इन पॉइंटर्स, हिस्ट्री हैज टू बी रेड एज स्टोरी. ठीक है. सो अगर मैं ये क्वेश्चन को देखूं तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स contributed for establishment of forward block by Subhash Chandra Bose in 1939. Okay. First statement is correct. We know about it. There was a dispute between Mahatma Gandhi on one side, Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad on one side, and Subhash Chandra Bose on the other side. That is correct. Second, Congress left was disunited and failed to support Bose. Now, this statement is incorrect. Why? Because Congress left came together and helped Bose to win Tripuri elections, त्रिपुरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. अब ये त्रिपुरी चीज है ना स्टेशन. आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा. ठीक है. जब तक आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग डीप इनफ नहीं रहेगी, यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस क्वेश्चन राइट. In fact, it was not a difficult question. It is a matter of whether you are choosing a shortcut or whether you are there to learn things, to understand things. All right. So second statement over here is incorrect. Rest of the statements are correct. Rest of the statements are correct. ठीक है. Moving on. Okay. Again a question जिसमें है ना इनकरेक्ट पकड़ना इजी है, करेक्ट स्टेटमेंट्स पकड़ना डिफिकल्ट है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं एंड if I look at if I look at take into consideration this question and if I look at statement number 1, so on the face of it is it incorrect. It is incorrect. ठीक है. What does it say? The talukdars were dispossessed of their estates but allowed to retain their arms and food. This could not happen only. ठीक है. This could not happen only. क्यों? क्योंकि अगर आर्म्स एंड फोर्स रखने दिया ना, दे वुड रिवोल्ट अगेंस्ट यू एंड दे डिड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ठीक है. तो इफ यू आर trying to establish your authority over a particular region and you are taking away economic wealth of affluential people in that region, तो आप उनके हथियार भी छीन लोगे, अदरवाइज वो रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन दैट वे ना. इस चीज को उस तरह से समझना इजी है. सेकेंड स्टेटमेंट हैज टू बी करेक्ट क्योंकि ऑलमोस्ट फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. क्योंकि सारे ऑप्शंस में वैसे ही आता है. थर्ड, ब्रिटिश बिलीव्ड इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेजेंट्स by removing the talukdars. Now this particular thing was applied in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश मतलब अवध at that point of time. ठीक है. उनको लगा तालुकदार जो है वो करप्ट है, तो rather than taking money through them, हम लोग डायरेक्ट ही पैसे लेंगे, and that is why they were dispossessed also. तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही हुआ ना कि डिस्पोजेस कर लिया गया, तो दिस इज द रीजन वाई मतलब उनको डिस्पोजेस किया गया. तो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में भी आराम से सोचेंगे तो थर्ड अपने आप उसको राइट कर देंगे. तो आंसर हियर इज बी. मूविंग ऑन. हाँ, और एक आ गया जिसमें आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत, डीपर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं, बस थोड़ा दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है 1919 के बारे में. एंड इट इज फोकसिंग ऑन कम्युनल इलेक्टोरेट टू बी स्पेसिफिक. ठीक है. इसमें थर्ड स्टेटमेंट को देखिए. फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड विद प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. ऑफ कोर्स दे डिड. 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को मिला था, 1919 में क्रिश्चियंस को भी मिला, एंग्लो इंडियंस को भी मिला, यूरोपियंस को भी मिला, सिख्स को भी मिला सेपरेट इलेक्टोरेट. ठीक है. Second statement, separate electorate were supposed to counter Indian nationalism which was growing strong. Obviously, we know about it. Communal electorate ये इसलिए गए थे कि divide and rule. On the principle of divide and rule, they were provided. Third statement, deprived classes rallied around the favors inherent in separate electorate. Now ये statement I will say, ये statement I will say, जैसे ही आप deprived classes को पढ़ते हैं ना with 1919, this statement becomes wrong. Because deprived classes got separate electorate in 35 and not 19. ठीक है. They got separate electorate in 35 and not 19. तो डिमांड जो यूपीएससी का है ना टू नो कि विच कम्युनिटी गॉट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट थ्रू विच एक्ट, वो कंटिन्यूड है. द ओनली थिंग दैट दे हैव डन इज पूछने का तरीका बदल गया. कॉन्सेप्ट वही है, पूछने का तरीका बदल गया.
So here the answer will be 1 and 2. Here the answer will be 1 and 2. Moving on. Pandit Mallikarjun Mansoor, represented by जयपुर अतरौली घराना. ये क्वेश्चन थोड़ा ऑफ द ये है, ऑफ द ट्रैक है. ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन जो बाउंसर है. ठीक है, students in that way are not so much oriented towards personalities and their gharanas unless and until उस साल with that respect to that particular personality na something great has happened, that personality was in news. So it is one of the question in which na personality was also not in news and still it was asked. So this is one of those question I would say जो आपको छोड़ना ही था. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना ही Sir, था 100%. while this was a well left, I want to emphasize that personalities have made a comeback, yes probably yes yes after yes a decade or so. yes yes बिल्कुल. Any questions, any doubts? Please students go ahead and ask. कोई अगर डाउट है तो. Right. So तो let's do one सीसेट more. के पेपर के बारे में आपका क्या है? सीसेट के पेपर के बारे में what was your analysis, sir? What did you think CSAT about was CSET? doable. CSAT Okay. was doable. I found it doable, provided you don't take it on ego. ठीक है ना, कि मेरे को तो CSAT में स्कोर करना है. The idea is you have to score 33%. Okay. Out of 80, attempt 40 questions, but make them count. Okay. Solid attempt chahiye, which you are sure. Everybody has their comfort area. Very rarely people are comfortable both in the comprehension RC and English wala part, if I may say so, right? And at the same time aptitude. Okay, somebody is either good in aptitude, struggle with English, and vice versa. Very rarely people are decently comfortable in both. So you have to choose, pick and choose. You choose your battles. अगर unnecessary की battles pick करोगे तो हार जाओगे. So 40 questions, out of it not difficult. Paper was relatively simpler, I would say. Okay, Correct. so that means there is a caveat here. That means that earlier many people were failing in CSAT, and that also impacted the GS cutoff, because the first filter is CSAT. Right. Right. And Right. you, Right. the Right. moment you are out of CSAT, no matter you are scoring 200 in GS, you are Right. out of the race. Right. Okay. So that will have a moderating effect, right, of something on the cutoff as well. Right. So Right. that's a point I want to make. But again, there is a flip side to it. The flip side is that most of you and most of the people who attempted this examination were in shock. जैसे बैटल में होता है ना, शॉक एंड ऑ बिल्कुल. टैक्टिक होता है वॉर में. सो यू बिल्कुल. वर इन शॉक, यू वर इन ऑ. सो even simpler things could have sounded or come across as difficult to a lot of you. So that will counteract it. I have just now received a message from one of our students, sir. I'll not name her, but she last year उसने इंटरव्यू दिया है. उससे पहले भी उसने मेंस लिखा है. तो 24 में शी हैज रिटन मेंस, 25 में इंटरव्यू तक पहुंची थी. उसका स्कोर इन जीएस इज 75 मार्क्स. So from that we can understand. And she is a very serious aspirant, very serious aspirant. Obviously, she has written mains Right. twice. तो उससे समझ में आता है. तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो चल रहा है ना दिमाग में आपके, आप लोगों के, कि मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, मत करो, आराम से रहो. ठीक है, वेट टिल द रिजल्ट. यू डू नॉट नो वेयर द कट ऑफ विल फॉल. हमें नहीं पता. ऑलराइट. Exactly. ठीक है. अब ये Exactly. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन है ना, इट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली अगर आपका दिमाग शांत है. ऑलराइट. ये पूछ रहा है कि क्षेत्र पत्नी किस टेक्स्ट में हमें ये मिलता है, ये टर्म क्षेत्र पत्नी. यू डिड नॉट नो इट फैक्चुअली. देखो, दो तीन चीजें याद रखना. अगर आपने एंशिएंट इंडिया थोड़ा सा भी पढ़ा है तो यू नो ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड आर्यंस वर नॉट स्टैटिक. क्षेत्र मतलब क्या? एक फील्ड है, उस फील्ड पे उस पर्टिकुलर औरत की मास्टरी है. ऑलराइट. खेत है, खेत पे उसकी मास्टरी है, एक रीजन है, उस पे मास्टरी है. ऋग्वेदिक पीरियड में ये हो नहीं सकता था बिकॉज दे वर नॉट स्टेशनरी. ठीक है. अथर्ववेद को इस वक्त मैं थोड़ा साइड में रखता हूं. द नेक्स्ट बुक अष्टाध्यायी, वी नो, मतलब अगर आप
मतलब हम आप लोग पढ़ते ही हो ना, इंपॉर्टेंट बुक्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, हु रोट देम एंड व्हाट डज इट कंटेन. वी नो कि दिस इज अ बुक ऑन ग्रामर. ऑलराइट, वी नो दैट दिस इज द बुक ऑन ग्रामर. एंड लास्टली अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि औरत कुछ ओन करे. अर्थशास्त्र इज नॉट ओरिएंटेड टूवर्ड्स विमेन पोजेसिंग एनीथिंग. तो क्षेत्रपत्नी अर्थशास्त्र में तो हो ही नहीं सकता. वो हो सकता है अथर्ववेदा में. अथर्ववेदा क्यों? कि बाकी 3 वेद आने तक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी हैड डेवलप्ड, स्पेशली लैंडेड प्रॉपर्टी हैड डेवलप्ड. ऋग्वेदिक पीरियड में ये नहीं था. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट. इसको आपको ना डिडक्ट करना था विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन एंड व्हाट वाज रिटन इन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट. सर, ऐसा कोई ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है. नहीं, मजा तो आता है सर, बट ठीक है, बिकॉज अर्थशास्त्र फॉर अगेन public administration students would have been able to decipher it better राइट, because राइट, we do delve into Arthashastra as part of paper 2. So the point here is that Arthashastra was a treatise on statecraft. राइट. Okay. And see, I mean, UPSC could have made this question even further difficult हम्म. by removing the explanation, mistress of the field. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. ये जो इन्होंने दिया है ना, मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, ये क्यों इज था? बेसिकली, हाँ, इसके इवन आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट. अगर मुझे क्षेत्र पत्नी बोला जाता, इवन आई डोंट नो व्हाट इट इज. मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड के बाद आई वाज एबल टू डिसाइफर दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस. आई वाज एबल टू डिकोड दिस पर्टिकुलर So ऑप्शन. clue embedded tha. The clue was राइट, very much राइट. embedded. And for Pabad people, Arthashastra you could have eliminated, like sir said. Rig Ved is one of the earliest Veds. So हम्म. you never had the concept of territorial possession in a manner we understand at the later part in history. So Rig Ved and Arthashastra could have been, you know, eliminated very easily. Now हम्म. taking cue from all the Vedas, हम्म. even if you just translate simple English what is हम्म. given to you and the terminology that is given to you and try and make a sense of it, कि ऋग्वेद अथर्ववेद में तो नहीं होगी, हम्म. अर्थशास्त्र में हो नहीं सकता, हम्म. तो क्या होगा? बट आई अंडरस्टैंड कि फॉर यू नो फॉर अ normal candidate to be sitting under pressure in the examination hall. Somebody was telling me at their center even fans were not working. That guy राइट, has राइट, राइट. actually caught Lou and he's probably gone sick now. Okay, राइट. so the point here is that the conditions are tough. Okay, हम्म. and we understand that is why for all practical purposes, if you are not a history optional student, okay, this question should have been a well left ball. ठीक है, ठीक है सर, आई एग्री, आई एग्री. चलते अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, दिस अगेन वाज अ क्वेश्चन दैट वाज टू बी वेल लेफ्ट अगेन. neither the personality was in news, neither the raga was in news. ठीक है, it was a question provided for the purpose of you leaving it, you ducking it and not attempting it. But I still know कि without knowing anything many students must have attempted it. Bilawal Many Bhutto was students. in news. हाँ. Bilawal Bhutto was in news for all the wrong reasons. रात में कौन आता है? Right. ओके. So, but I don't think that UPSC राइट, formed राइट, this राइट. question based बिल्कुल. on रागा Bilawal Bhutto. बिलावल इसका आंसर है डी. ऑलराइट, अगर मैं इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहा होता ना, आई वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड इट. कुछ बच्चों ने वो भी अटेम्प्ट किया. होशियारी देखिए सर. मेरे को बोला सर इन्हीं का नाम सबसे लंबा था ना, तो यही सबसे अलग लग रहा था, तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया. अब वो भी चल जाता है यार, क्या बताऊं. ठीक है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन ना, हिल्टन यंग कमीशन. दिस इज द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच आरबीआई वाज क्रिएटेड. ऑलराइट, अब जैसे ही आप उस चीज को समझते हो, देखो, ब्रिटिशर्स और रूपी स्टर्लिंग, ये चीज जैसे ही आता है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स एंड रूपी स्टर्लिंग इज एसोसिएटेड विद टेकिंग अवे मनी फ्रॉम इंडिया. बात खत्म हो गई. ठीक है. हिल्टन यंग, both of them were economists, and they were associated more with India's monetary policies, and how that monetary policy will help not India but Britain. ठीक है, but Britain.
In fact, RBI was established for the purpose of making it easy to take money from India to Britain. ठीक है, तो यहाँ पे द आंसर इज ए. अगर मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखता हूं तो आई वुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन only on the logic that Britishers were oriented towards taking money from India and putting it in Britain. ठीक है, the Just answer to to this question is A. just to add to this point, actually, we need to understand. For example, we are talking about Pakistan, okay? And I'm just drawing the analogy. So they can be good bootlickers for Americans, right? So similarly, I mean, रंग नहीं बदलते जैसे लोग होते. So the Britishers had only one motive, that is to loot India. One. Two, let me just connect it to and just draw more thread out of it. The idea is that this falling rupee and exchange rate has been in news. Okay. So if you draw the thread, a learning which is constant in this paper today is, and please, I hope you all are making notes, that what is happening in the current, that can be traced back to the historical ideas, and those historical ideas can be asked. In our analysis document, we have actually paid a lot of stress on this point, that the current events were couched in the concepts, in the history. So, in this particular question, if you see, this is completely a facto analytical question, as in you have to deduce why it was there. One logic was good enough to deduce it because you don't have options in statements. You have to choose either one option. Okay. So the point here is that aiding the flow of remittances, because that was the logic to Britishers. They cannot support Indians. Okay, just like Pakistanis cannot be good neighbors. Encourage export of cotton produced from India. They had uh, a monopoly. They were actually the colonial power. Preventing depreciation of rupee in terms of gold. Gold standard comes very late. Okay, when the dollar starts falling, and this was in news. Precisely. So just try and connect the dot. I know it is not easy. It is not easy for students. Many of faculties won't be able to connect those dots. Let me tell you this. Okay. But this was perhaps on the flip side, if I play the devil's advocate and disagree with Viraj sir, this was perhaps the easiest question. The crux of the matter was not in Hilton Young. Okay. It can be Milton Old commission or any damn commission out there. Okay. But the point is, what was the intent? Right. Right, सीधा sir. इसको कनेक्ट करना है दादा भाई नौरोजी के इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के साथ. वेरी गुड सर, वेरी गुड. राइट, डायरेक्टली कनेक्शन यहीं पे बैठ. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक और चीज आप नोटिस कर रहे हैं सर? क्या सर? क्वेश्चंस है ना सब्जेक्ट के, मतलब देर गुच्छे में आ रहे हैं. ये हमारे टाइम पे अगेन नहीं होता था. हाँ. ठीक है. अगेन वी आर बैक टू कल्चर. हाँ, आर्ट एंड अगेन वी आर कल्चर. बैक टू कल्चर. यस, यस. एक मिनट. So those of you who are watching this, right, please do put in your questions. And even if Right. somebody ends up watching it later, right, do put in your questions in the comments, and we'll be happy to reply it. राइट, राइट. तो दिस क्वेश्चन ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक क्वेश्चन हर बार दे आर आस्किंग अबाउट अ पर्टिकुलर टर्म. ऑलराइट, दे आर आस्किंग अबाउट अ पर्टिकुलर टर्म. तो इस बार उन्होंने टर्म्स के मामले में कॉइन्स के थ्रू पूछ लिया. ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है ना, उन्होंने 3-4 टर्म्स दे दिए और पूछ लिया कि डिड दे रिफर टू कॉइन्स. ठीक है, डिड दे रिफर टू कॉइन्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन. एग्जांपल, कहापन्ना, निखा, हमसा एंड काकानिका. डिफिकल्ट टू, बेसिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको डिसाइफर करना. सेकंड पे चलते हैं. एक मिनट. ओके, सेकंड पे चलते हैं. The literary evidence from Pali text is corroborated by archaeological evidence of punch mark coins from many sites.
मोस्ट ऑफ देम मेड ऑफ सिल्वर। अब ये देखो कि अगर मैं इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर पा रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द सेकेंड स्टेटमेंट, मोर और लेस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द सेकेंड स्टेटमेंट। अब ये यहाँ पे रुक नहीं रहे। नॉर्मली व्हाट वुड हैव हैपेंड इज ये दोनों पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, फिर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आता, सिलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब उसके आगे जाके व्हाट दे वांट यू टू नो इज the above statement has been associated with which of the following: emergence of urban life, transition to money economy। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, the first two statements are to be taken into consideration as to be correct। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो दे आर आस्किंग व्हाट अबाउट द टू प्रपोजिशंस, डिड इट लीड टू इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ, डिड इट लीड टू ट्रांजिशन ऑफ मनी इकोनॉमी। अब ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। द प्रॉब्लम दो विद दिस क्वेश्चन दो इज कि इट हैज कम इन अ न्यू स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज इट हैज कम इन द न्यू स्ट्रक्चर ना, स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव रेड दिस क्वेश्चन प्रॉपर, और यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी होगी। ठीक है, देखो मनी इकोनॉमी जब शुरू होता है ना, तो डायरेक्टली व्हाट वी सी इज या कॉइन्स जब आते हैं तो डायरेक्टली व्हाट वी सी इज मनीड इकोनॉमी पे फोकस हो जाता है, बार्टर नहीं रहता। when there is when there is large circulation of or large production of coins, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन के लिए अब आपको पैसा चाहिए, बार्टर नहीं चलेगा। सेकेंड थिंग, इट हैज बीन हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ सिटीज। बार्टर predominates in the areas that are rural, that are villages, that are hinterlands। all right, so both of these statements are correct, both these scenarios are correct। ठीक है, मनीड इकोनॉमी आने की वजह से देयर वाज इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ एंड देयर वाज ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। राम मंदिर बना था सर, तो मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आएगा। हाँ 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 हाँ। एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव हम्म। इन फ्रंट ऑफ अस। अगर देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन को भी आंसर करना इतना डिफिकल्ट नहीं था सर। रीजन फॉर दैट इज ज्योग्राफी। इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन द प्लेसेस, राइट, द प्लेस जहां पे ये मंदिर है, और फिर अगर हम लोग उसको एसोसिएट करते हैं नगरा स्टाइल से, ठीक है, तो 1 and 4 इज एलिमिनेटेड। राइट। ठीक है, एंड देन वी गेट आंसर टू बी बी। तो हिस्ट्री को थोड़ा ज्योग्राफी के साथ भी मिक्स करो। ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूं ना, तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन सा टेम्पल कौन कौन सी स्टाइल से बना है। ऑब्वियसली इट इज रिटन इन एनसीईआरटी एग्जांपल्स में, ये टेम्पल्स दिए हुए हैं, आई नो दैट, लेकिन इतना याद नहीं रहता ना। एट दैट पॉइंट ऑफ राइट। टाइम आई विल एसोसिएट द प्लेसेस, geography of that place with temple architecture, सो with फ्रेंड्स, the दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ओके, जैसे hmm, आप इग्लू, यू वोंट मेक एन इग्लू इन अ डेजर्ट, राइट? hmm, एंड hmm. यू वोंट हैव एन ओएसिस एट अ ग्लेशियर, राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ अ लॉजिक। और मुझे याद है सेकंड स्टैंडर्ड की किताब में होता था ऐसे इग्लू बना हुआ कि कहाँ बनता है, ठीक है? Right. एंड दोज ऑफ यू probably, you know, I don't know whether your generation has seen this or not, but in our generation there used to be this pingu. Hmm, 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 hmm. Okay, so the point to drive home is that the geography impacts the architecture of a place. Okay, कहाँ कैसी चीजें होंगी, what will be the construction of a particular temple, especially ancient. Right now you have modern techniques with which you can make anything anywhere, at least for some years. But the point is that these all are historical places, historical temples. So Right. it was like sir said, sir has given a golden rule to remember places. Okay, this rule is not written in any book, probably, the way he has conveyed it, Hmm. and it is not taught by many because they themselves don't know it. So the point here is very simple. Whenever you are looking at a historical place, look at the architecture from the point of view of geographical location. Right. Right. Okay? So Right. this is very important. Very important. Right.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, दिस इज अगेन एन इजी क्वेश्चन. Among the four main forms of existence, which one is not included in Jainism? ठीक है, देवा, यक्षा, मनुष्य, त्रियांश. ठीक है, अब ये याद रखो कि देवा या गॉड विल बी एसोसिएटेड विद एनी रिलीजन एज सच. ठीक है. नेक्स्ट, मनुष्य विल ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद एनी रिलीजन एज सच. क्यों? बिकॉज मनुष्य ही जो है ना रिलीजन को बिलीव करते हैं. ठीक है, सो देर विल बी नो रिलीजन विच डज नॉट बिलीव. सर मार्क्स आ रहा है, मार्क्स मार्क्स बाहर आ रहा है आपका. अच्छा. नहीं, ठीक है. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इट इज पीपल ना जिसके लिए रिलीजन है. राइट राइट राइट. राइट, जो रिलीजन में बिलीव करते हैं. तो मनुष्य तो होंगे ही. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल एसोसिएटेड विद मनुष्य, यू कैन नॉट टेक राइट. देम अवे फ्रॉम मनुष्य. ठीक है, तो एनी रिलीजन, बी इट एनी रिलीजन, दिस थ्री थिंग्स विल बी देयर ओनली. यक्षा जो है दैट इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म, नॉट जैनिज्म. ठीक है, इन सम केसेस यक्षा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म. ठीक है, बट नॉट विद जैनिज्म. अगर मुझे इन चारों में से एक चुनना है ना, देखो आई एम ऑल्सो नॉट अ स्कॉलर ऑन जैनिज्म, लेकिन आई विल गो विद दिस लॉजिक कि रिलीजन के साथ चीजें कौन सी एसोसिएटेड है या कौन सी एंटिटीज एसोसिएटेड है. तो यक्षा आर नॉट कंपल्सरीली एसोसिएटेड विद रिलीजन. ठीक है, नॉर्मली इट इज एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, बट नॉट ऑल द रिलीजन्स एज सच. बाकी तीन तो सारे रिलीजन्स के पार्ट है ना, इंक्लूडिंग जैनिज्म. तो आई विल गो विद बी, यक्षा. आई विल गो विद बी, यक्षा. ठीक है, तो इवन आई डू नॉट नो, बट ये आंसर सही निकल गया. अभी भी है सर, मतलब जो था ना 2016 तक का, अभी भी है थोड़ा. Obviously you haven't failed any prelims Okay, ever. okay. Now this question is directly from NCRT. But if you have not read NCRT, na, even then there is a trick of solving it. याद रखना, केव पेंटिंग्स नॉर्मली आर प्री हिस्टोरिक. प्री हिस्टोरिक मतलब जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था. ऑल राइट. केव पेंटिंग्स धीरे धीरे हम लोग देखते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, हिस्टोरिकली वो कम हो गए. क्यों कम हो गए? बिकॉज अदर फॉर्म ऑफ आर्ट डेवलप्ड. ठीक है, लोग गुफाओं में रहते थे. गुफाओं में रहते तो टाइम पास में केव पेंटिंग करते थे. जब लोग धीरे धीरे गुफाओं में रहना ही बंद हो गए तो केव पेंटिंग क्यों करेंगे? राइट. वन मोर थिंग, व्हेन a particular type of question is associated with a concept na, if you do not know that concept itself, think about a related concept. ठीक है, अब यहाँ पे केव पेंटिंग पूछा है, बट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अ केव दैट इज नॉट दैट वेल नोन. अब मैं क्या करूंगा पता है? मैं इसको सीधा एसोसिएट करूंगा द बेस्ट नोन केव पेंटिंग्स इन इंडिया, दैट इज भीमकेटका. अब भीमकेटका में व्हाट इज द फोकस? फोकस इज डांस एंड सेकेंड इज हंटिंग. ऑल राइट, डांस है और हंटिंग है, तो आई विल गो विद दैट. एक लॉजिक ये भी है ना भाई, जब वो लोग केव्स में रहते थे तब तक तो रिलीजन डेवलप नहीं हुआ था. मतलब ऑर्गेनाइज रिलीजन डेवलप नहीं हुआ था जिस तरह से आज हम लोग रिलीजन को देखते हैं. राइट, सो दे विल फोकस ऑन डांस. दे विल बेसिकली फोकस ऑन डांस. जब तक वो घर में रहने गए तब तक रिलीजन आ गया, आर्ट के दूसरे फॉर्म भी आ गए, तो क्यों पेंटिंग इंसान क्यों करेगा? सर लॉजिक सही है. बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑन पॉइंट है. ऑन पॉइंट है सर लॉजिक. एंड it is also very important that we understand why this subject is called as general studies. राइट. Because ये जनरल बात कर रहा है. ठीक है, हम इसको ऐसा बना लेते हैं, वी फोकस मोर ऑन द कंटेंट एंड लेस ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स. And that is the casualty which happens most of the time while studying as well as while teaching with a lot many people. ओके, सो इसको जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज की तरह पढ़ना चाहिए. एनसीईआरटी का सीधा साधा क्वेश्चन है ये. ओके, देयर वाज नथिंग फैंसी अबाउट दिस वन. ठीक है सर, इफ यू कुड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं थोड़ा सा पानी ये कर लो, पानी पी लो. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 17. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया. ओके, यहां जो बात हो रही है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम की हो रही है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लेस वैल्यू सिस्टम? We have, just the basic is you go to the standard
1 2 3 4। ओके, वहां हमें पढ़ाया जाता है decimal number system, this number system, that number system. Okay, for example, we call it 10 lakh, Americans call it 1 million. Okay, so कहीं से तो counting शुरू हुई होगी. There must be some place where we started organizing the numbers as we began to count. So let us look at the statements. The earliest epigraphic use of the place value system in India is found in the Mankani plates from Gujarat, and they have given the time period 595 to 596. Now, if you look at this particular statement, this statement is correct. Again, it is referring to history, it is referring to extension of art and culture, because we are talking about coinage economic system that started developing. Second statement: in the ninth century, place values became general in inscription all over India. Look at the distance that has traveled. ये कहीं तो इवॉल्व हुआ होगा. जब ये इवॉल्व हुआ, एंड इवॉल्व होने के बाद ये प्रोपोगेट हुआ, एंड इट बिकेम अ कॉमन thing which came to be accepted by the class and the mass of the society. तो इसको 400 साल लगे. हमें ये सोचना पड़ेगा. Okay, that whether, this took 400 years. Yes, because there was no internet. Okay, no railways, no flights, right? No jet engines, no steam engine, nothing. So it must have taken 400 years where we saw its common usage. अब इस question की इस statement को you should not analyze. हाँ हाँ सब जगह मिल गई. I look at every city in India and सब जगह I got the inscription. The idea is to convey that it has a wide prevalence now in the 9th century. Okay, 300 to 400 years usko lage. The place values have been found in Sanskrit inscription in Southeast Asia as early as 7th century. अब कोई भी न्यूमेरिक चीज है अगर, okay, numeric numbers, the first thing is the exchange that happens, and exchange happens through commerce. And we know that India has been trading with, India has been the trading hub of the world for many centuries. ओके, सो साउथ ईस्ट एशिया में ये 7th सेंचुरी में मिलने लगी, जबकि वहां 9th सेंचुरी में थी. तो वहां ऑब्वियसली पहले पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, ये भी करेक्ट. This is also correct. So, if you look at this particular question, the answer is D. The answer is D. Okay? Because a lot many of the times you must be thinking, oh, I did not know the chronology. Forget about the chronology. Okay, I'm disagreeing with the home minister, but यहाँ chronology से ज़्यादा उसके context को समझिए. Understand the context. Though history is not a subject that is my forte, I'm just filling in the void for Viraj sir here. Okay. Sir, ठीक है explanation? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा इन्होंने खेला है इसके साथ. ऑल राइट, थोड़ा सा दे हैव प्लेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू हड़प्पा सिविलाइजेशन, एंड व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सरप्राइज्ड यू. They basically have surprised you by creating new type. Creating new type of the question. All right. So हमें इस क्वेश्चन को देखना होगा अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई तीनों स्टेटमेंट्स जो है रोमन में जो दिए है 1 2 3, रोमन में जो दिए है 1 2 3, ऑल दिस थ्री आर करेक्ट. ऑल राइट. एंड देन वी हैव टू लुक इनटू, देन वी हैव टू वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ कि उन स्टेटमेंट्स का इन्फ्रेंस क्या निकल सकता है. तो स्टेटमेंट्स है, उसके बाद में उसका इन्फ्रेंस आपको पूछा गया है. तो इफ यू लुक इनटू इट, इफ यू लुक इनटू इट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देयर इज वाइड ऑकरेंस ऑफ सिंगल वॉल्स इन द हाउसेस एंड एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स. ठीक है. वेट्स एंड मेजर स्केल्स complete with graduations have been discovered. Okay, ठीक है. And last is there have been houses built in large part with baked bricks.
तीनों थिंग्स यू ऑलरेडी नो अबाउट हड़प्पा. अगर आपने हरीश शर्मा का हड़प्पा सिविलाइजेशन का चैप्टर पढ़ा, यू नो अबाउट देम. इतनी कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग inferences can be drawn? Statement 1 suggests that spinning was a laborious activity done at home. ठीक है. ठीक है. Second, statement 2 suggests the extent of scientific knowledge that the Harappan possessed. ठीक है. Statement 3 suggests the emergence of common property system. कैसे यार, अगर कोई अपना घर बना रहा है अगर कोई अपना घर बना रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दैट इज अ कॉमन प्रॉपर्टी. क्वेश्चन देखो कितना इजी है. क्वेश्चन देखो कितना इजी है. 3 हो ही नहीं सकता यार. कोई अपना घर अगर ईंटों से बना रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कॉमन प्रॉपर्टी हो गया. तो 3 इज आउट ऑफ क्वेश्चन. आंसर देयरफॉर इज ए 1 एंड 2. अब यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन अगेन, नॉट द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन. स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम. ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन, एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम, अगेन आई वुड से बिपिन चंद्रा. इसलिए पढ़ना जरूरी है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बुक और एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बुक और एनीथिंग लाइक दैट, बट इसीलिए बिपिन चंद्रा पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट बिपिन चंद्रा से क्वेश्चन उठाया गया. एंड द आंसर इज सी. बरदोली सत्याग्रह वाज कैंपेन अगेंस्ट एनहांस लैंड रेवेन्यू, well eka movement was the protest against excessive extraction of rent, जिसे बोला जाता था, मेनली जिसे बोला जाता था नजराना. मतलब आपने रेंट दे दिया, रेंट के ऊपर भी आपको कुछ देना होगा लैंडलॉर्ड को. what was it was called nazrana. So eka movement was basically against it. Bardoli satyagraha is associated with Sardar Patel, and in fact it is here in Bardoli that Sardar Patel got this title of Sardar. Vallabhbhai Patel got this title of Sardar. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना कुछ है ही नहीं ऐसा. इट इज डायरेक्टली अ क्वेश्चन दैट हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम बिपिन चंद्रा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आपको स्टेटमेंट्स दिया है शुरुआत में. यू हैव टू कंसीडर दो स्टेटमेंट्स टू बी करेक्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ना आपको इन्फ्रेंस निकालना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको इन्फ्रेंस निकालना है. ऑल राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इरिगेशन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज irrigation from well allowed agriculture to expand from floodplains and strips on river margins into present Punjab and Haryana plains having underground water level reasonably close to the surface. Okay, ठीक है. Second is drought animal power was employed to draw up water out of the river. ठीक है. Now if you take into consideration क्या inference हम लोग इसमें से निकालते हैं. This is evidence in Rigved of the use of Ashma Chakra, stone pulley well, and ahwa strap wooden pails to draw water. ठीक है. Mention has been made in Rig Veda of the use of implements like axe and sickle. अब ये नहीं हो सकता. Okay, thank you Arun. Hello Himanshu, how are you? Lost and found, how are you? Okay. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है ना, सेकेंड स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट. व्हाई इट कैन नॉट बी करेक्ट? क्योंकि एक्स बनाने के लिए, सिकल बनाने के लिए चाहिए होता है मेटल, और उस वक्त कम था मेटल. ऑल राइट. तो मेटल इज समथिंग दैट इज नीडेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एक्स एंड सिकल. वो हमारे पास था नहीं. वो हमारे पास क्या मतलब उन लोगों के पास नहीं था हु लिव्ड इन ऋग्वेदिक पीरियड. ठीक है. मेटल वैसे ही कम था फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग वेपन्स. तो जब तक पीपल डिड नॉट सेटल इन मगध, दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू large quantities of metal. So second cannot be correct at all. So we are left with 1 and 3. We are therefore now left with 1 and 3. Yes, history was in plenty. क्या करें? History was in plenty. ठीक है. तो answer to this question is C, 1 and 3. Moving on. Now this was from current affairs. Direct current affairs से ये था क्वेश्चन. ठीक है. डायरेक्ट करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था. आई थिंक
जिन्होंने रेगुलरली न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़ा है ऑफ करंट अफेयर्स, they must not have found it to be difficult. The answer here is Ecuador. UNESCO Answer here is any Ecuador. which UNESCO any which way was very important because Right. many of the sites in India also Hmm. were listed as part of its various lists. Okay. Hmm. So UNESCO was an area that was very much in news through the past year, and this question, if you see, people are saying that it is difficult, 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 difficult. The paper is difficult, but look at this question. It gives you everything. ओके ग्लोबल जियो पार्क बाय यूनेस्को इन 2025 इससे ज्यादा क्या चाहिए मित्रों Hmm. ओके सो दिस इज समथिंग दैट इज गिविंग यू कि क्या हो रहा है अच्छा इट हैज आल्सो गिवन यू द लोकेशन इफ यू सी द कंट्रीज ऑल ऑफ देम आर इन साउथ अमेरिका Right. राइट सो Right. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हेयर इज इक्वाडोर Hmm. I mean, there is nothing conceptual about it. If you knew, you knew. If you did not, if you did not. It is as simple as that. ठीक. Next one, sir. Okay. Now this Madhav National Park again it was declared Tiger Reserve in 2025. Obviously, if it has been declared Tiger Reserve, so you have to know important things about it. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका लोकेशन तो आपको पकड़ना पड़ेगा. ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट तो बहुत इजी है कि टाइगर रिजर्व इसे डिक्लेयर कर दिया गया. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, यू हैव टू नो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एंटिटीज विद इन दैट पर्टिकुलर रिजर्व. और जब ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था तो संख्या सागर वॉज मेंशन्ड इन ईच एंड एवरी न्यूज रिपोर्ट. तो आप इसे मिस ही नहीं कर सकते थे. लास्टली इट्स एरिया इज शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. ऑब्वियसली अगर कोई टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है तो वो कहाँ पे है, ये तो आप पढ़ेंगे ही, ये तो आपको पढ़ना ही है. ऑल राइट. सो सेकेंड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज कंप्लीटली लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. ये तो आपको पता होना ही चाहिए. ठीक है. इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. सम एरियाज ऑफ इट गो इन टू अदर स्टेट ऑल्सो बट नॉट इन राजस्थान. ठीक है. तो थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है आपके पास आंसर है B1 and 2. आपके पास आंसर है B1 and 2. अगेन दिस वाज नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये करंट अफेयर्स से था. दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम करंट अफेयर्स. ऑल राइट. दिस क्वेश्चन अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट. इनफैक्ट ये वो क्वेश्चन है ना जिसमें आपको पकड़ना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और जैसे आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट पकड़ लेंगे आपके बाकी के दो स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार के ऊपर फोकस है. क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट. ऑब्वियसली वो ये तो लोकेट कहा, जहां पे इक्वेटर लोकेटेड के है वहां पास पे है तो ऐसा ही क्लाइमेट होगा. बस वैसा ही होगा ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून. आज थोड़ा सा अगर आंखें बंद करके सोचोगे ना एनसीईआरटी का वो डायग्राम जो दिखाता है डायरेक्शन साउथ वेस्ट मानसून का और नॉर्थ ईस्ट मानसून का, तो समझ में आता है कि दोनों में ही अंडमान गिरता है. बेसिक कॉन्सेप्ट था रिवर्सल ऑफ विंड से राइट राइट रिवर्सल ऑफ राइट. विंड्स अगर है तो आप समझ जाओगे जो उसकी हम्म. लोकेशन है और जो हम्म. उसकी टोपोग्राफी है हम्म. वो दोनों से ही मतलब मॉनसून उसको मिलेगा साउथ वेस्ट भी राइट. और नॉर्थ ईस्ट भी बिल्कुल 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 बिल्कुल. मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड में हो ही नहीं सकता. ठीक है. वैसे भी सर तीन ऑप्शन वाला कोई भी मतलब तीनों स्टेटमेंट वाला कोई भी ऑप्शन ही नहीं बना राइट राइट. तीनों स्टेटमेंट वाला कोई भी नहीं था. मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड में, ये सिर्फ उन्होंने खेला है. इट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. इट इज बेसिकली नॉट करेक्ट. आंसर विल बी 1 and 2. आंसर विल बी 1 and 2, दैट इज बी. ओके. नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन लाइक द प्रीवियस वन. ठीक है. हम्म थोड़ा सा सोचोगे ना आंसर आ जाएगा. यहाँ पे ना कुछ और मत करो. स्टेटमेंट 3 देखो. डीप वी शेप रिवर वैली इज फॉर्म्ड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर. कैसे हो सकता है? पेनिनसुलर प्लेटो में या दक्कन में फास्ट फ्लोइंग रिवर आपको कहाँ मिलेगी? हिमालय थोड़ी है वो ठीक है. दिस इज फॉर्म्ड इन हिमालयस. दक्कन में इफ यू लुक इनटू इट ना, रिवर्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर रीजन और वो रिफ्ट वैली वगैरह वो गैप में से पास हो रही है. दैट गैप इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन बीइंग अ रिफ्ट वैली एंड नॉट बिकॉज ऑफ इरोशन.
फास्ट सर फ्लोइंग इरोजन, उसकी सर वजह से नहीं होता। आई वांट टू ऐड वन पॉइंट हेयर. हाँ प्लीज The सर। point is ki if friends, if you look at the trajectory of questions, now the questions are becoming simpler. राइट राइट राइट। Okay, so often people get superstitious. Oh, I will start first attempt. I will start from question number one. Second attempt, I will start from question number 100 backwards. Third attempt, oh my God, I will start from 51 to 100. Fourth attempt, I will start from 52 backwards one and then 100 to backwards 51. Friends, don't get into these omens, don't get into these superstitions कि हाँ बैठा रहे, सचिन मार रहा है या कोहली मार रहा है वाली, you you should not get into all this. First thing is, scan the paper. There will always be questions that are going to be difficult, and then there are always going to be low hanging fruits. Pick up the low hanging fruits. Okay, that is what a smart candidate does. You need not be emotional about it. आता है नहीं आता नहीं आता. Every question is going to give you 2 सही marks. बात है, सही बात है, That's सही it. बात। ओके, ईगो पे नहीं लेके जाना है यार. मैंने इसके लिए 4 किताबें पढ़ी थी, 5 किताबें पढ़ी थी, चार कोई से की फर्क क्लास नहीं लगाई पड़ता, थी. कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता. Nobody gives a damn about that ego. Let me tell you. Nobody. Yes, sir. और जितना बड़ा ईगो उतना स्कोर कम। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, टेल मी, बड़े बड़े ईगो डिस्कशन की सही वजह से जा रहा है? बहुत लोगों के काम भी बंद हो जाते हैं सर. हाँ सॉरी बड़े बड़े ईगो की वजह से बहुत लोगों के काम भी बंद हो जाते हैं. सर, अभी आप अपना पर्सनल ठीक है सर. नहीं नहीं, लेट्स स्टूडेंट्स को पता कंटिन्यू है, विद द स्टूडेंट्स को क्वेश्चन. पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक नहीं नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. है। अच्छा ठीक है सर, मैं बोलूं किसके बारे में? नहीं नहीं सर, लेट अस स्टार्ट विद द ओके क्वेश्चन. ओके ओके ओके। टेल मी इफ टेल मी इफ द सेशन इज गोइंग फाइन स्टूडेंट्स। अच्छा ये ऐश मिस, क्यों भाई, क्यों मिस कर दिया 2 क्वेश्चंस? और अगर मैप विजुअलाइज कर रहे थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, तो आंसर क्यों नहीं किया क्वेश्चन को? पहले ही बोला है लो हैंगिंग फ्रूट्स को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो आंसर कर सकते हो उसे छोड़ना नहीं है। ओके चलो, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वी नीड टू टेल द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन. अच्छा, इट इज 1 and 2। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ मैं कोई आगे आ गया क्वेश्चन। हाँ, इट इज 1 and 2, B 1 and 2। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सागर माला, कितने सालों बाद ये वर्ड देखा सर? देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन है सर। इफ यू कुड टेक दिस क्वेश्चन, इट इज ऑन गवर्नेंस, आप एक बार अगर देख ले तो। ओके, सो सागरमाला प्रोजेक्ट, ocean critical minerals, supply chain resilience and disturbances are in news. Okay, so this is something that you had to keep a tab on. Okay, Sagarmala is again one of the flagship ideas that are associated with the government of India's current policy. Okay, so Sagar Mala's program seeks to provide Sagar Mala thread and the beads. What are those beads? Those beads are the ports. Okay, seeks to achieve port-led economic growth through cost-effective and sustainable coastal infrastructure. Very vanilla, very easy. Okay, so, statement one is correct. The success of the Sagarmala program is reflected in the significant growth in coastal and inland waterway shipping, along with improved global port rankings. This is something that is again was in news, and a press information bureau, PIB press release was on it, which I have provided in the analysis document that we have shared with you all. So if you look at these two statements are correct. Now let us look at three. Sagarmala 2.0 aims to position India as a global maritime innovation hub aligned with Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047 vision. Now, all the jargons, all the buzzwords, okay, that you see the political leaders using in rallies and all of that, that is something that is visible here.
Okay. Now, the moot point is that statement number one, statement number two are correct. Okay. If you see statement number three, it is actually extending Sagarmala further, the Sagarmala 2.0. And this is also, if you see, correct. But the options, the way they have been framed. Now, UPSC has added two layers. Earlier, if you see the areas above, statement 2 validates the effectiveness, strategies, vision, this used to be there in the option. This part used to be there in options. Now they have added one more layer. They are giving you certain analogies and deductions out of the given statements. Okay, now look at this. Statement 2 validates the effectiveness of the strategies envisioned in statement 1. This is something which is correct. Okay, so if you look at the statement 1, it is supporting it, isn't it? Okay, so the relationship is also very correct. Now, if you look at 2, point number 2, numeric 2, not Roman 2. Statement 3 extends the objectives of statement 1 by embedding them into future oriented innovation framework. This is also correct. Okay. Now look at numeric 3 statement. Statement 1 contradicts statement 3 by focusing on traditional infrastructure. No, that is not a contradiction because that is Sagarmala 2 comes after Sagarmala 1.0. So that is the logical extension. Okay, so numeric 3 statement becomes incorrect. That means we will have to select the code B, that is 1 and 2, for this particular question because the statement 3 is numeric statement 3 is not aligned with the idea of the question. So this is something that you should know. Websites like Wikaspedia provides you excellent details on schemes. Okay, apart from of course the press releases, the economic survey, and the ministry's own website. But the point here is it was a game of patience. If you would see the question and you would have got nervous, then this simple question would have become incorrect, right? So shall we move to the next one? Yes. सर एनवायरमेंट क्वेश्चन आप लेंगे? अरे नहीं वैसे सर, ये आप लीजिए, इतना आप लीजिए इतना इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. अब एक वर्ड के वजह से ना ये क्वेश्चन पूरा खुल गया. सर. सेकंड स्टेटमेंट में देखिए वर्ड है एंडेमिक. खत्म. ठीक है, एंडेमिक इज एन एक्सट्रीम वर्ड. एंडेमिक मतलब वहीं पे मिलेगा, राइट? तो जैसे ही कोई एक्सट्रीम वर्ड दिखता है ना, वैसे ही अलर्ट हो जाना चाहिए. अगर एक्सट्रीम वर्ड है तो देन द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. एंड एज द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द अदर्स टू स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट. ये इस पेपर की खास बात थी. आपको एडवर्टाइज करके बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और जैसे ही वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. वन राइट. मोर थिंग, इस पेपर में एक चीज और नोटिस करने लायक है. ओनली वन या ओनली टू, वन ओनली या टू ओनली या थ्री ओनली, ऐसे बहुत कम चीजें हैं जो राइट है. ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस में है कि वो राइट है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन थ्री स्टेटमेंट्स आर आस्क्ड ना इन दिस पेपर, जब तीन स्टेटमेंट पूछे गए तो उसमें से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट आ रहे हैं. तो यहाँ पे बट बिकॉज द वर्ड इज एक्सट्रीम, नहीं नहीं, मैं बस एक ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगले साल भी राइट. ऐसा ही होगा. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, स्टेटमेंट टू, बिकॉज इट गोज एक्सट्रीम, द आंसर विल बी 1 and 3. आपको बाकी सब चीजें मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, स्टेट फ्लावर वगैरह या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है. दिस वन वर्ड विल हेल्प यू इन गेनिंग 2 marks. बस इतना ही. ओके. नेक्स्ट वन सर. नेक्स्ट वन, एक मिनट आएगा. मोइडैम्स. सर मोइडैम्स, ये हाँ तो मैडम, पूछा एक था मिनट. शायद टेस्ट सीरीज में. जी 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 जी. हो, एक मिनट.
मैं फोन पे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, बिकॉज ऑफ वेबकैम इट इज गेटिंग ब्लॉक्ड, दैट इज व्हाई आई हैव टू सी द क्वेश्चन ऑन फोन. ओके. Which of the अगेन following सर, statements with regard to Moe dams built by Thai Ohom Kingdom and inscribed as World Heritage Site by UNESCO is are correct? सर ये फेयरली हम. रिसेंट एडिशन था. दिस वाज हाँ, फेयरली बिल्कुल रिसेंट बिल्कुल 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 एडिशन बिल्कुल. इन द यूनेस्को लिस्ट. अगर एक बेसिक रीडिंग भी की जाए ना, मतलब ये पूछ रहे कि भाई उसका मतलब उसको बिल्ड करने का मतलब ही क्या था, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. ठीक है. सो एक बेसिक रीडिंग इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी न्यूज आर्टिकल ऑन मोई डैम्स ना, इट वाज रिटन कि दे वर बरियल ग्राउंड्स. ठीक है. दे वर तो बरियल छब्बीस ग्राउंड्स और कुछ छब्बीस जरूरत ही नहीं जुलाई था इसका. 26 जुलाई 2024 प्रेस रिलीज है सर, पीआईबी. राइट. राइट. और ये डायरेक्टली फर्स्ट या सेकेंड लाइन में ही मेंशन्ड है कि उसका पर्पस क्या था. हाँ. ठीक है. और कुछ जरूरत ही नहीं है. मूविंग ऑन. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था. दिस क्वेश्चन वाज अ बिट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप इसको ये नहीं कर सकते थे, डिसाइफर नहीं कर सकते थे, डिकोड नहीं कर सकते. दिस इफ यू क्वेश्चन न्यू इज यू सच. न्यू. हाँ. हाँ, अगर दिस पता था तो क्वेश्चन पता वाज था, नहीं सच तो कोई जिसमें नहीं. आपको ना, क्योंकि देखिए वो पूछ रहा है कि भाई ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ये और वो. अब जब ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाएगा तो आई विल गो विद बेटर ओशंस, आई विल गो विद बेटर मैंग्रोव वेजिटेशन, बट द आंसर हियर इज बी. ठीक है. आंसर हियर इज बी. तो दिस इज वन क्वेश्चन विच आई माइट हैव आल्सो गॉट. हाँ, राइट. करंट अफेयर्स के बेसिस पे इसको राइट किया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, राइट. नॉट ऑन द राइट सर, बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस. ये नहीं हो सकता था इस ये क्वेश्चन. नहीं हो सकता. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. दिस लेक अगेन वाज इन न्यूज. दिस लेक अगेन वाज इन न्यूज. ठीक है. एक और नया चीज यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने में देखा गया है. अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए सर. द लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सुडान along the eastern fringe of Sahara Desert. Normally अब तक क्या देखा गया है ना सर, कि if the statement is partially correct, यूपीएससी में ना अगर partially correct statement दिया जाता है तो statement is on the whole is correct. अब ये difficult हो गया. इसमें दो चीजें इस स्टेटमेंट में. पहला तो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन विद कंट्री साउथ सुडान, एंड सेकंड इज कॉन्टिनेंट में वो कहाँ लोकेटेड है, या सहारा डेजर्ट के रेफरेंस में वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है. तो ये वाला पार्ट सही है, ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ सहारा डेजर्ट, ये सही है. नॉर्मली नॉर्मली माय डियर फ्रेंड्स एंड सर, नॉर्मली ना जब ये ऐसी दो चीजें दी जाती थी तो उसमें से अगर एक चीज सच है तो दूसरा भी सच होता था. अब यहाँ पे ना यूपीएससी ने मारा है पलटी. ऑलराइट. तो अभी आपको ये दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज नॉट लोकेटेड इन साउथ सुडान, इट इज लोकेटेड इन केनिया. इट इज लोकेटेड इन केनिया. ठीक है. एंड सम पार्ट ऑफ इट आल्सो गेट्स इनटू युगांडा, बट इट इज लोकेटेड इनटू इन केनिया, मेनली केनिया. ठीक है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगेन इन्होंने इस बार एकदम ये करके रख दिया. यूनेस्को, आई टोल्ड यू सर, मतलब हम्म, इस बार पूरे पेपर में आपको अगर छाया यूनेस्को पे हुआ है. आपने टैब रखा है ना, तो छाया हुआ हम्म, है एकदम. यू कुड हैव गॉट इट राइट बेटर. राइट 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 राइट. अब यहाँ पे ना ये अब अगली बार से स्टूडेंट्स ध्यान रखे. पहले ये था कि इफ देर आर टू थिंग्स, टू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन अ क्वेश्चन, और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर सही है तो दूसरा भी सही है, तो स्टेटमेंट ओवरऑल इज करेक्ट. नाउ दैट इज नॉट द केस. फ्रॉम नाउ यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू थिंक कि ऐसा ही होगा. ऑलराइट. यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू थिंक कि ऐसा ही होगा. ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज इन केनिया. और देखो यार, एक और चीज नोटिस करो, व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट हेरिटेज साइट्स, दे आर फोकसिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द हेरिटेज साइट, चाहे वो इंडिया का हो या बाहर का हो. यहाँ पे भी दे हैव आस्क्ड अबाउट वेयर इट इज लोकेटेड, और वहां पे भी दे हैड आस्क्ड अबाउट, जो हम लोग देख रहे थे ना, इंडिया का एक साइट देख रहे थे, इंडिया की जो वो ये देख रहे थे, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व देख रहे थे, सॉरी. इवन देयर दे हैड आस्क्ड अबाउट द लोकेशन. तो लोकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, लोकेशन याद रखना. और जो वो गेम कर रहे हैं, ठीक है, गलत स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ना, दे आर डूइंग इट लोकेशन के बेसिस पे. ऑलराइट. तो आई एम नॉट सेइंग कि अगले साल भी यही होगा, बट इट इज अ रेफरेंस पॉइंट. इट इज अ रेफरेंस पॉइंट. ऑलराइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, प्रोजेक्ट पे है तो इफ यू कुड टेक इट. ऑलराइट. सो
if you will see this RED plus RED, all these abbreviations, ये हम environment से अगर हम देखें तो इसको हम environment and ecology से relate करके देखते हैं. Right. So when you look at this, India बहुत सारे efforts कर रहा है in this, whether you talk about the International Solar Alliance, renewable के ऊपर, or India is very serious to compliance of various protocols. Uh, that we study in the environment. This is very simple question that ways. If you had a tab on it, ओके, तो कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है. द क्वेश्चन रीड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रिड्यूसिंग emissions फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन REDD प्लस प्रोजेक्ट इन इंडिया. पहली बात तो ये फर्स्ट फिल्टर, where will this project be? This project cannot be in the desert of Rajasthan. This will has to be in the areas where there are forests. Okay, so if you see the locations first, all of these locations are forested location. So the first filter is checked. Now the idea is, if you knew, okay, there was a current affairs regarding this as well. तो उतना ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं था, but as a concept, if you see the REDD plus certification, that is very important. That is very important. The correct answer for this is the Khasi Hills community. Uttarakhand mein, with all due respect to Uttarakhand and its people, it is very difficult because you have multiple big cities around Uttarakhand. So जैसी छुट्टियां होती हैं, लोग पहुंच जाते हैं वहां एनवायरमेंट खराब करने. Okay, so the point is, and whereas we have read about multiple pieces, the better India, this there, where actually people in the northeastern part of the country have been far more sensitive towards the environment. They tend to live more with the environment. Yes, Chipko movement, etc. They all happened, in the Uttarakhand area. But the point is, right now, if we see, it is the Northeast that has taken lead in sustainability, in actually working towards this particular goal. Okay, so this is something that is important for us to note, that we need to look at this particular aspect. Okay, so this is something that is important. Now, I guess Viraj sir is on a break. Okay, so we'll be shifting the uh, to the next question. The answer for this question is uh, option C. Option C, Khasi Hills Community REDD project. Khasi Hills Community REDD project. All right. So let's take a break of a couple of minutes. Meanwhile, Virat sir will be back. Okay, and then we'll be taking up further questions.
All right. So Viraj sir is back with us. Sir, next question, sir. हाँ, एक मिनट. So we are done with this. Okay. Okay, let us look at the next question. Let us look at the next question. Just give me a minute. सब लोगों ने आंसर की चेक कर ली है. एक बार अपना स्कोर डाल दो यार. I know most of you must have checked your answer. Most of you must have checked the answer की. अपना स्कोर डाल दो. Right. Those of you who have actually checked your answer keys, please put the score in the chat section, or comment it later when you'll be watching it. Or you can If send them to us. Right, you can send them to us. By the way, the description of this particular session carries all the relevant links, whether they are of our Telegram handles, whether website, whether courses, right? So me and Virat sir are here to help you out, and there is a session tomorrow. Like I said, that is going to happen. I'm once again putting up the link of that session. The registration is mandatory, and me and Virat sir are going to provide you the personalized study plan in terms of how to go forward. Sir, let us Right. take up the question. Okay. So, question number 31. Consider the following statements with respect to India's response to climate change. First statement is India's long-term low emission development strategy LT leads is crucial tool for achieving net zero emission by 2070. Second statement, India's fourth biennial updated report submitted in December 2024 recorded around 8% decrease in greenhouse gas emission in 2020 over 2019. Last statements, climate resilient development necessary depends on quick and short term achievements of emission reduction targets. अब इन तीनों statements को what you have to do is you have to consider them to be correct for the purpose of answering this question. ठीक है. Now based on these three, now you have to establish relationship between the statements. ये तीन आपने पढ़ ली है. उसके बाद आपको ना रिलेशन देखना है इन तीनों स्टेटमेंट्स में. सर ये तो सीसैट हो गया. सर सीसैट भी हो गया, और दूसरी बात ये कि इतने फैक्ट्स किसको याद होंगे? फोर्थ राइट. बिलियनियल सो अपडेट हाँ, रिपोर्ट. सही है. बिल्कुल बिल्कुल. सो यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर दिस फैक्ट्स. यूपीएससी इज गिविंग यू दिस फैक्ट्स. राइट, ठीक है. दैट इज द और पॉइंट टू बी अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स. राइट राइट. आपको वो रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछ रहा. इट इज टेलिंग यू दैट द रिपोर्ट गॉट सबमिटेड इन ये चीजें है 2024. रिपोर्ट में. अब आप बताओ कि इस बेसिस पे आप मतलब इसमें रिलेशनशिप क्या गिर रहा है. ठीक है. एग्जैक्टली. तो अगर आप इसमें जो इंग्लिश न्यूमेरिकल 3 है वो स्टेटमेंट देखोगे तो व्हाट डज इट से. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टेब्लिश प्रीमाइस फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. नाउ दिस कैन नॉट बी ट्रू. दिस कैन नॉट बी करेक्ट. व्हाई? बिकॉज रोमन 3 में देखिए शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैन नॉट गो विद शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स. तो अगर मैं इस लॉजिक को अप्लाई करूं तो व्हाट डू आई सी इज इंग्लिश न्यूमेरिकल 1 वाला स्टेटमेंट और इंग्लिश न्यूमेरिकल 2 वाला स्टेटमेंट ना दे आर करेक्ट. 3 कैन नॉट बी करेक्ट सिंपल ग्रामर के वजह से. ठीक है. और कुछ नहीं. सिंपल ग्रामर का भी अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंसिकली यूज करो तो थर्ड स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट. व्हाट डू वी सी इज 1 and 2 बी करेक्ट एंड बी टू बी द आंसर. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अगेन अ गुड क्वेश्चन. Question number 32. With respect to Western Pollock Gibbons, which of the following statements are correct? Again, they were in focus in current affairs. All right. A sanctuary in Northeast India is home to this ape species listed as endangered in IUCN Red List. और ये कब हुआ है लिस्ट? पिछले साल.
All right, because it was listed last year in the list of IUCN, in the red list. Now it was in news, so it is not so difficult. Second, they have specialized. They have specialized brachiation and can easily swing between trees. अरे बंदर है तो वो उछलेगा ही एक ट्री से दूसरे ट्री, उसमें सोचने वाली बात क्या है? ठीक है. थर्ड, दे पोजेस स्ट्रॉन्ग एंड हेवी बिल्ड लाइक गोरिल्लास. देखो कॉमन सेंसिकली भी ये हो नहीं सकता. ऑलराइट, हर बंदर गोरिल्ला नहीं हो सकता, जैसे हर इंसान जो है वो माइक टाइसन नहीं हो सकता. ऑलराइट, तो कॉमन सेंसिकली ऑल्सो इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन ना, स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट. ठीक है. Otherwise also you should be knowing about it. Otherwise also you should be knowing about it. Why? Because it was in current affairs. So answer here is B, 1 and 2. Okay. Let us move on to the next question. Which of the following best explains the rationale for protecting mangrove ecosystem in the context of climate resilience? सीधा सीधा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी से और एनआईओएस से. सीधा सीधा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी और एनआईओएस से. All right. First, mangrove reduce tidal energy and store fresh water, making them ideal for paddy cultivation in saline belts. Absolutely wrong. ऐसा होता ही नहीं है. All right. ऐसा होता ही नहीं है. They do not have the capacity of separating fresh water and saline water. और ठीक है, what mangroves do is वो पानी के फोर्स को कम कर सकते हैं. ठीक है, दो अलग अलग टाइप के पानियों को इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर ना, सेपरेट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट सेपरेट देम. ऑलराइट. सेकंड स्टेटमेंट, देयर सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स फिल्टर filter sea water, making mangroves key to converting coastal land into freshwater aquaculture zone. हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता. Mangroves can sustain in salt waters. They can grow in salt waters. But salt water में salt water को fresh water में वो convert नहीं कर सकते. ठीक है, वो convert नहीं कर सकते. अगर convert कर सकते होते तो हम लोग अब तक उस पर पढ़ाई करके what we would have done is we would have created solution for water problems in India. So this cannot happen. Second statement is also wrong. Then, by withstanding tidal surge and offering biomass, mangroves function both as natural bioshield and livelihood basis for rural community. Obviously यही तो मेन रीजन है मैंग्रोव्स का. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देता है, थोड़ा सा बायोमास देता है, थोड़ा सा वेव्स को रोक के रखता है. दैट इज द रीजन. ठीक है, सो हियर डी इज द आंसर. डी इज द आंसर. वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चंस, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस में से एक है. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ना जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी. ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत ही नहीं थी. ऑलराइट. इन व्हाट वे डज Vizhinjam International Seaport represent a structural shift in India's maritime trade and logistic policy? First statement is by functioning exclusively as domestic cargo hub. कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में ही बोल दिया इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक कैसे हो सकता है? ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट, by focusing primarily on passenger cruise tourism and heritage shipping to increase Kerala's profile as a maritime heritage destination. Again, this cannot be possible. Again, ये possible नहीं है. Again, ये possible नहीं है, क्योंकि if it is a port, तो पोर्ट का प्राइमरी फंक्शन इज ट्रेड. ऊपर से ये लिखा भी है इंडियाज मेरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी. तो अगर ट्रेड एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी है तो क्रूज टूरिज्म उसके साथ नहीं जाएगा. क्रूज टूरिज्म उसके साथ नहीं जाएगा. थर्ड, by leveraging its natural deep craft, the natural deep draft and strategic location to reduce dependence on foreign transshipment port, enhance revenue retention and reposition India in regional maritime trade. यही तो है. बाकी दो अगर सही नहीं है तो your answer will be D3 only. Your answer will be D3 only. Okay. Now coming to question number 35.
आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सीधा सीधा ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया, सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया। ऑल राइट, और कहीं से नहीं, मतलब कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आई वुड से। फर्स्ट इट सेज इट हैज एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे ना एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है द रिवर वॉज प्रेजेंट बिफोर हिमालयस, द रिवर वॉज प्रेजेंट बिफोर हिमालयस। अब इसमें कौन कौन गिरता है? इसमें गिरता है ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, ये 3 रिवर्स इसमें गिरेंगे। ठीक है। इट फ्लोज थ्रू थ्रू 3 कंट्रीज। तो यहाँ पे बिना व्हाट वी सी इज ब्रह्मपुत्र इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू चाइना एंड देन इनटू इंडिया एंड हाँ बांग्लादेश ऑल्सो। तो 3 भी हो सकता है। ये ब्रह्मपुत्र ऑल्सो फॉल्स इन दिस कैटेगरी, इंडस ऑल्सो एंड अगेन सतलज ऑल्सो। ठीक है। इट ओरिजिनेट्स इन तिबेटियन प्लेटो एंड इज इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरिगेशन, अगेन तीनों भी होती है। इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी ये जो है ना, इट इज ओनली ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंडस। ठीक है, इट इज ओनली ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंडस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रह्मपुत्र एंड सतलज। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटरीज, बोथ ऑफ देम हैव डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो इंडस जहां से गुजरता है ना, और इंडस का जो वाटर क्वांटिटी है, इंडस इज वेरी लिटिल वाटर क्वांटिटी बिकॉज इट पासेस थ्रू अ वेरी ड्राई रीजन। इट कम्स फ्रॉम अ वेरी ड्राई रीजन एंड इट ऑल्सो पासेस थ्रू अ वेरी ड्राई रीजन। इंडस में बिल्कुल पानी नहीं है। इनफैक्ट कराची में जब इंडस जाता है, कराची के पास जब इंडस जाता है ना अरेबियन सी में, वो बहुत पतला रिवर दिखता है तभी भी। ऑल राइट, सो इट पासेस ऑल्सो थ्रू अ वेरी ड्राई रीजन। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटरी तब बनेगी ना व्हेन यू विल हैव, जैसे ब्रह्मपुत्र के केस में बहुत बारिश गिर रही है, जिस एरिया से वो पास हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज गिरे बनेगी। क्योंकि जो नॉर्मल कोर्स है पानी का, उसे फ्लो करने के लिए, उसमें से फ्लो करने के लिए, मतलब जितना पानी है ना वो उसमें से ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, द सेम कैन नॉट बी सेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडस, इट कैन बी सेड विथ रिस्पेक्ट टू सतलज बिकॉज इट पासेस थ्रू हेवी रेनफॉल वाला एरिया। ठीक है, द सेम इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंडस, तो आंसर विल बी बी। द आंसर हियर विल बी बी। बाकी 3 स्टेटमेंट्स तो तीनों रिवर्स के लिए सही है। 4 स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट जो है ना, 4th स्टेटमेंट, इट डिस्टिंग्विशेस इंडस फ्रॉम द अदर रिवर्स। ऑल राइट, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। देखो इस बार जैसे मैं बोल रहा था ना, अगर एक एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो मोर और लेस उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? विथ रेफरेंस टू which of the following with reference to Indian states is are not correct? So they are asking about incorrect statements. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स। तो दिस इज कॉमन नॉलेज, जब हम लोग स्कूल में थे तब से हमें बताया जा रहा है, या फिर अगर आप ल्यूसेंट पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें भी ये दिया गया है। सेकेंड थिंग इज कि दिस इज अ पीवाई क्यू। एक बार पहले ये क्वेश्चन आ चुका है इन यूपीएससी, बट इट वाज वे बैक, आई थिंक इट वाज इन लेट 90s जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल राइट, इट वाज वे बैक इन लेट 90s। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिकली इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, राजस्थान शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स। राजस्थान शेयर्स द लार्जेस्ट अमंगस्ट ऑल द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज वेस्ट बंगाल। West Bengal shares the longest international border, and West Bengal does it with Bangladesh. West Bengal does it with Bangladesh. All right. Also, to a certain extent, with Nepal, but Bangladesh. Sikkim is the only state that shares its border with just one Indian state. This is also not correct. Okay, this is also not correct. We have other states also, for example, we have other state also, for example, Meghalaya. We have मेघालय। ठीक है, तो सिक्किम इज द ओनली, देखो ये है ना द वर्ड ओनली, इट मेक्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक्सट्रीम। तो गोइंग बाय द लॉजिक ऑफ एक्सट्रीम एंड यूपीएससी, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट। राजस्थान वाला यू ऑलरेडी नो इट। ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस भी थे रिसेंटली, दैट इज व्हाई द स्टेट वाज इंपॉर्टेंट एंड हेंस इज ज्योग्राफी वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है ना, वी शुड गो विद सी 2 and 3, we should go with C 2 and 3. Okay, now moving to the next question. Which of the following statements regarding the arrival of Amur falcons at Doyang Lake in Nagaland each year from Mongolia is correct? ठीक है, it showcases how sustained
Local conservation efforts can contribute to arrival and protection of international migratory bird. 100% correct. Great focus was put by Nagaland, people of Nagaland, government of Nagaland, people of Nagaland, and also by government of India, but mainly by the people of Nagaland for the purpose of conservation of the region. Second, it reflects global success of advanced trafficking technology that guides migratory birds their back to their stop ओवर साइट्स. कैसे हो सकता है यार? ठीक है. ट्रैकिंग साइट्स बर्ड्स कैसे यूज करेंगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग. लॉजिकली ये गलत है. ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है. परिंदा कैसे यूज करेगा? इट कंफर्म्स दैट अमूर फार्कन्स हैव अडॉप्टेड परमानेंट रेसिडेंसी इन इंडिया. नहीं, माइग्रेटरी. ठीक है, क्वेश्चन इज अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स. तो अगर माइग्रेटरी है तो परमानेंट रेसिडेंस हो ही नहीं सकता. ऑल राइट, परमानेंट रेसिडेंस हो ही नहीं सकता, तो 2 and 3 आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. सर, इफ यू विल टेक दिस क्वेश्चन ऑन गवर्नेंस. So the question actually says that which of the following is or are the objectives of rain-fed area development RAD initiative under the National Mission for Sustainable Agriculture NMSA. Mind you, this NMSA, if you look at the NMSA, this was in news. Okay, this was in news. Why? Because there is a PIB release for this. The PIB release, if just allow me a second, I'll tell you the exact date of that PIB release. The exact date is 9th of May 2026. 9th of May 2026. So this, I mean, we are getting this close now. If you see, okay, the structure of the question is simple: encouraging monoculture in rain-fed areas. Now tell me, we are talking about rain-fed areas, and should we encourage monoculture? Monoculture can be encouraged in the irrigated areas where you have assured water, just by the logic of it. Okay, so any encouraging monoculture in rain fed areas rather completely opposite with the intent of the NMSA. So this particular statement becomes incorrect. Okay, then increasing rice cultivation in irrigated regions. If you look at this, again rice requires खड़ा पानी चाहिए होता है चावल को, धान की खेती को. Okay, so again this is contradictory. Then enhancing productivity and minimizing climatic risk through integrated farming system. This makes more sense. Okay, so just by the logic of it कि क्या है वो rain fed area है, right? And it is talking about sustainability. So the first two statements are completely incorrect. The correct answer then would be D, option D. All right, simple, straight question. Next up. Okay, next question is again from current affairs. Which of the following is our most significant implications of obtaining Okotech certification for Eri silk in the global textile industry? All right, it allows Indian exporters to compete in high-end markets that prioritize chemical-free products. 100%. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. ठीक है. In fact, when this certification was in news ना, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स वाला पॉइंट सबसे आगे रहता था. ऑलराइट, तो एक चीज चेंज नहीं की है यूपीएससी ने, एंड व्हाट इज इट? दे आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ करंट अफेयर्स. जब आप कोई इनिशिएटिव पढ़ते हो, जैसे यही सर्टिफिकेशन की बात करूं ना, द थिंग्स दैट अपीयर in first one paragraph, even that is more than enough for answering these questions. Second statement, it confirms that Eri silk meets international safety, environmental and quality standards, enabling its entry into premium
इको कॉन्शियस मार्केट ऑब्वियसली अगर केमिकल फ्री है तो इट विल बी इको कॉन्शियस. देखो, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ना, दो ही चीजें हो सकती है इस क्वेश्चन में. पहली चीज जो हो सकती है, फर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज, because these two statements are so related to each other, either both these statements will be correct or both these statements will be incorrect. All right. And if you look into the history of UPSC, the way in which questions are framed, बहुत कम बार D will be the answer, neither one nor two will be the answer. If I was in your place और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो I will go with both one and two. I will go with both one and two because they are so related to each other. जैसे मैंने बोला ना, they can be either both correct or both incorrect. I will go with both one and two are correct. All right. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बना है यूपीएससी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है. ठीक है, जो जो आपने पढ़ा ना स्ट्रेट ऑफ होमरूज के बारे में, देखो अगेन द थिंग इज दैट ना कि यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा. पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, बट मैपिंग के क्वेश्चन है ना बाय हार्ट नहीं हो सकते. मैप आपके आंखों के सामने आना चाहिए व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. राइट. पीपल अंडर एस्टिमेटेड, वो बाय हार्ट करने जाते हैं. अब ये क्वेश्चन बाय हार्ट करने से तो सॉल्व होगा नहीं. ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपके आंखों में ना ये कंट्रीज, आपके आंखों के सामने ये कंट्रीज नहीं आती. ठीक है. सो इफ यू लुक इनटू इट, तो सिंपल चीज है, सीरिया एंड इजिप्ट विल यूज द स्विस कैनल. ठीक है. एंड स्विस कैनल इज नॉट कनेक्टेड टू हरमुज, हॉर्मुज. ठीक है. दिस इज कनेक्टेड टू बाबे मेहदिब. तो आंसर ओवर हियर विल बी आंसर ओवर हियर विल बी 1 and 3. वैसे भी सर ये दिस वाज वेरी मच इन न्यूज. यस मतलब यस यस मैप यस, दिखा देगा. बिल्कुल बिल्कुल अभी तुम बिल्कुल. ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन क्रॉस करेगा. यार ये देख लो कि ईरान किस किस पे बम मार रहा बराबर है. सही बात है. है. नहीं नहीं, बिल्कुल सही लॉजिक है सर. यू शुड गो विद दैट इवन इफ लॉजिक. यू डो नॉट नो कि स्विस कैनाल यूज होगा ब्ला ब्ला ब्ला, ईरान किस किस पे बम मार रहा है. कतार और बहरीन. ठीक है. दैट्स बिल्कुल इट. बिल्कुल. नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन सर. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था. मतलब इट वाज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें ये एक्चुअली ना, इट वाज नॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स आल्सो. ठीक है. दिस वाज अ क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अगेन दिया था डक करने के लिए. ऑल राइट. लेकिन फिर भी इसमें भी मुझे पता है कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी उन्होंने इसमें अटेम्प्ट मारा होगा. ऑल राइट. इफ वी लुक इनटू इट, इफ वी लुक इनटू इट ना, सो सिल्वर नोटिस जो है, इट इज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस अ क्रिमिनल एसेट. ब्लू नोटिस इज फॉर द पर्पस ऑफ, is for the purpose of collecting additional information about person's identity, location and activities. Black notice is for the purpose of to seek information on unidentified bodies, and green notice is to identify and trace. Green notice is for the purpose of providing warning about a person's criminal activities. So answer for this particular question is C. There was no as such logic, I would say, for the purpose of this question being there. तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि आपको परेशान किया जा सके. दिस वाज नॉट राइट. फॉर द पर्पस ऑफ अटेम्प्टिंग. ऑलराइट. लेकिन मुझे पता है ना बच्चों ने किया होगा अटेम्प्ट. मैं बिल्कुल इस बात पे पैसे लगा सकता हूँ. ठीक है. ओके सर, गवर्नेंस का क्वेश्चन है, इफ यू कुड टेक इट. Which of the following statements in relation to Nirantar, National Institute for Research and Application of Natural Resources to transform, adapt, and build resilience, a platform of institution under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change are correct. पहले तो if you recall, there I put out a video which talked about this thing, that you need to remember the full forms. You need to remember the full forms of any such stuff that is coming in from the point of view of governance. Okay, so this is something that was absolutely essential when it comes to answering such questions, because a lot of you get entangled in the full form only.
ठीक है, और उसी में घूम जाता है एक कैंडिडेट. दे आर नॉट एबल टू डिसाइफर कि ये करना क्या है. But many a times the full form actually holds the key. Now look at the statements. Okay, we need to find the correct one. Ecosystem survey and analysis is a vertical under this platform, the lead institute of which is Botanical Survey of India, Kolkata. Now, if you closely observe this particular question, or rather the particular statement, it is correct. It is correct. Remember, I talked about the stakeholder mapping idea vis-a-vis every such body scheme. What is the implementing agency? What is the nodal body? How it is implemented? And if you look at this particular question, all the three statements are largely hovering around the stakeholder mapping. Research and management of ecosystem service is a vertical under this platform. The lead institution is Central Zoo Authority. Now remember, these instead of statements could have been framed in a match the following manner as well. Okay. Capacity development support is a vertical under this, and it is under Indian Institute of Forest Management. Indian Institute of Forest Management. The correct option is A. All of them are correct. But the idea is if you got the hang of the institutional mapping, that is fine. Otherwise, you are gone. Okay. Otherwise, don't get into gambling when it comes to such questions. Right. Next one, sir. Okay. Next question, let us look into it. Take a very easy question. So it is about Chancellor of Germany coming to India, and what were basically the results of his coming to India. पहला, signing of a memorandum of understanding between All India Institute of Ayurveda, and University of Hamburg. Second statement is signing of memorandum of understanding on youth hockey development between Hockey India and the Hockey German Federation. Third statement, a bilateral dialogue mechanism on Indo-Pacific. And lastly, opening of honorary consul of Germany in Lucknow. So 2 and 3 are correct. 2 and 3 happened, but they are asking कि क्या नहीं हुआ था, what did not happen. तो 1 and 4 did not happen. 1 and 4 did not happen. ठीक है. So now देखो पहले है ना, this type of questions were not asked कि when a leader of a particular country came to India, it was not asked कि हाँ ठीक है, in what all areas we have signed agreements and all those things, but it was expected. मतलब ये expected था कि कभी ना कभी ऐसा question आएगा. UPSC has now started with it. ठीक है. So you need to concentrate upon these facts, not only from the point of view of mains now, to see where we are engaging with other countries, but also from the point of view of prelims. All right, now it is also important from the point of view of prelims. So answer will be B, 1 and 4. 1 and 4 nahi hua tha. That is what they're asking. Okay. Now this again is the question in which UPSC is getting into technicality from the point of view of numbers. Dhruv 64, almost everybody knows about it. ठीक है. It is something जो news में रहा है. ठीक है. It is the third chip fabricated under the program with overall aim to enable the creation of microprocessors in India. सही है. It is India's first homegrown 1 gigahertz 64-bit dual core microprocessor. This statement, this ये जो है ना 1 gigahertz 64-bit dual core microprocessor, now you need to know about this information also. हमारे टाइम पे we did not care about this information because UPSC was not interested. Now वैसे भी I want to highlight a point here, sir. This is something which is getting down to factual, technical to the decimal. Right. Okay. Generally, UPSC does not mess with this. Right. Okay, so if you have able, because this was widely publicized and there was a Right. PIB बिल्कुल release on it as well. बिल्कुल. So
I believe if you have just identified कि हाँ ये ध्रुव है, इसने क्या कपड़े पहने वो मैटर नहीं करता, आप शक्ल से पहचान गए हो कि ये ध्रुव है, सो दैट इज गुड इनफ टू मार्क ऑप्शन सी. कहीं ना कहीं हमें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में. राइट सर. सो ये द आंसर ओवर हियर इज सी, बोथ 1 and 2. ओके सर, BIS का क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिए. All right. So, Bureau of Indian Standards, again, a body coming into the question, recently introduced a national standard to test and assess bomb disposal systems. Which of the following statements regards to this system are correct? First of all, friends, you cannot actually remember the standard number. Okay. So, not on earth you can remember the standard number. So I believe the factual leap of faith idea one is correct. It will improve interoperability of improvement across agencies. That is what the idea of standardization is. Just like you have plugs, switches, which are standardized. Okay, whether you have Havel, Kona, or this and that. Okay, all of them work, right? It was developed by TBRL DRDO in collaboration with the 30th Central Scientific Research Institute, Russia. Now, this is a statement that is coming across as a very obscure kind of a statement. Okay? Because we are looking at India bomb disposal system. So, mostly you will be confused between A and C. That's a given. First two statements are correct here. But why will we develop it with regards to this thing, explosives, when there have been plenty of announcements by the government that we have become largely Atmanirbhar when it comes to explosives and munitions? Okay, so defense sector, there are going to be more questions on the defense sector where they are talking about the core commanders and things like that. So I want to emphasize, because we are living in the post Operation Sindoor era, defense sector comes across as important. Okay, a lot of new developments are happening when it comes to drones, Shahid drones in Iran, and other stuff is actually in the news. We are sadly in the era where the perennial wars are going on. So this is a sector to watch out for, especially for prelims and obviously for mains, linking it with internal security, what is happening in the northeast and things like that. So the idea is that the third statement is incorrect. It is incorrect. It is with TBRL and DRDO. There was no uh, collaboration with Russia on this. Okay, there was a PIB release on this as well. So even if you do not know PIB release, this was a 50-50 gamble. Okay, next question, sir. ओके, दिस इज एन इजी क्वेश्चन. अब ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि यूपीएससी इस तरह से ना नोबेल प्राइज विनर्स के नाम नहीं पूछता. व्हाट यूपीएससी यूज्ड टू डू इज, फॉर एग्जांपल, somebody has got Nobel Prize for their work on say graphene, तो वो ग्रेफाइन के बारे में पूछेंगे. they will not ask, they will basically not ask कि भाई ग्रेफाइन के ऊपर रिसर्च किसने किया और उसको नोबेल प्राइज मिला है तो उसका नाम बताओ. ठीक है, that was not the case. Any which ways, the answer to this question is C, जॉन क्लार्क. Factual question. Factual question. राइट, ठीक है. तो इस तरह से तो यूपीएससी नहीं पूछा करता था. दे वुड आस्क अपॉन देयर एरिया ऑफ रिसर्च. ऑल राइट, लेकिन ठीक है, नाउ वी आर इनटू अ न्यू एरा आई गेस. ठीक है, ओके. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. Grand Slam tennis. ग्रैंड स्लैम वेरी इजी. बाकी सब छोड़ के सीधा इफ यू कम टू द थर्ड स्टेटमेंट ना, it writes there is a limitation on number of wild cards a player may receive to compete in a grand slam tournament. wild card मतलब you do not have to compete to become part of that tournament. आप directly इस tournament का part हो सकते हैं. how can there be a limitation? there cannot be a limitation ना. मतलब अगर हम लोग logically सोचे, वाइल्ड कार्ड किसको दिए जाते हैं? वाइल्ड कार्ड उसे दिया जाता है who is associated with that particular sport, with tennis for a long period of time, has brought credit to tennis and can bring audiences. ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देयर कैन नॉट बी लिमिटेशन.
देयर बेसिकली कैन नॉट बी लिमिटेशन। ठीक है, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पहले दो स्टेटमेंट्स भी मैं देख लेता हूँ। टूर्नामेंट्स हैव अ शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिशिंग पार्टनरशिप अमंग्स द फोर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। बिल्कुल, कौन से फोर ग्रैंड स्लैम्स? यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलटन एंड फ्रेंच ओपन। ठीक है, सो दे हैव टू वर्क विद ईच अदर। They are open to entry to all internationally ranked players above the age of 14। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बट इवन इफ यू डिड नॉट नो दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड थ्री इज एलिमिनेटेड, ठीक है, थ्री इज एलिमिनेटेड ना, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल आइदर गो विथ ए 1 and 2 और ओनली सी 1। ठीक है, ऑन और विल गो विथ सी 1 ओनली। ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, if you are not that much into tennis or into sports administration, I would say leave this question। अगर आपको रिस्क लेना है तो दिस देन देयर इज अ डिफरेंट, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आइदर यू कुड हैव मार्क्ड बिटवीन 1 and 2 एंड सी। ठीक है, आइदर यू कुड हैव मार्क्ड बिटवीन ए और बिटवीन सी। आई वुड हैव एट दिस स्टेज मार्क्ड ए। मैं ए मार्क करता बिकॉज मुझे पता है कि जूनियर ग्रैंड स्लैम्स भी होते हैं। बट इफ यू आर नॉट इनटू स्पोर्ट्स, आई विल से लीव दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो दिस वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन सर, ये तो करंट अफेयर्स से डायरेक्टली। ठीक है, अभी अभी फॉक्सकॉच। मोदी जी ने साइन बिल्कुल भी किया है टाटा बिल्कुल वाला। बिल्कुल सो बिल्कुल अगर इसका बिल्कुल। पता था तो पता था। देयर वाज नथिंग कॉन्सेप्चुअल अबाउट इट, दिस इज राइट राइट डायरेक्टली राइट, करंट अफेयर्स, फैक्चुअल। डायरेक्टली करंट अफेयर। इंडिया और इज एम्फसाइजिंग ऑन सेमीकंडक्टर दूसरी सो चीज है, मच। इस पे बहुत इशू भी हुआ था। हाँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये सही था या गलत था, बट इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ बैड पब्लिसिटी ऑल्सो। राइट। ठीक है, तो आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश। आंसर इज सी, उत्तर, यहाँ पे ना उत्तर प्रदेश आना चाहिए रेदर देन मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर नॉट प्रदेश का करेक्टली जो, मैच्ड। यस, नॉट करेक्टली मैच है ना, तो इट शुड हैव बीन उत्तर प्रदेश नॉट मध्य प्रदेश। ऑलराइट, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements with regard to हाँ, India's indigenous new high resolution weather model Bharat forecast system? This was in news and यस so यस recently, यस like यस very recently it was यस, in news. Okay, राइट। its objective is to generate forecast at the panchayat cluster level. ये ध्यान रखना, if the government is talking about something related to space and it is not defense, हम्म it is either communication और रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। जनरल ट्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल ट्रेंड। ठीक है, तो पंचायत लेवल क्लस्टर, bang on, that's the correct idea. Now when you say it was developed by IIT, no, it was developed by Indian Institute of Tropical Meteorology। सब चीज IIT में नहीं बनती। ओके, pun intended। So the idea is fairly simple. Okay, so you had only first statement as the correct one. Answer is A. Answer दैट is टू A. आईआईटी दिल्ली सर। नहीं नहीं, वहां दिल्ली में जाने से बनती। भी चीजें नहीं होती। मूविंग ऑन सर। ओके, चलिए। ओके, बाफ्ता। अब दिस अगेन इज a diversion that UPSC has taken। बाफ्ता, ऑस्कर्स, नेशनल अवार्ड, ठीक है, इससे यूपीएससी को अब तक मतलब नहीं था। बहुत पहले, आई थिंक इट वाज इन 1997 और 1998, तब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अवार्ड्स के ऊपर, फिल्म अवार्ड्स के ऊपर। ऑलराइट, बट ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ग। The first statement is film has recently won British Academy of Film and Television Arts Award in children's and family film category। बिल्कुल सही है। Film is directed by Lakshmi Priya Devi, 100%। This is an Indian film to win BAFTA। This is the first Indian film to win BAFTA in children's and family film category। All the three statements basically are right। All the three statements basically are right। अब बच्चे क्या करेंगे ना सर, अगले साल पूरा लिस्ट बनाएंगे, किसको ऑस्कर मिला, किसको ये मिला, बाफ्ता मिला, किसको एमी अवार्ड्स मिले, और फिर यूपीएससी अगले साल ये पूछने वाली है नहीं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम। ठीक है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन यू विल नीड फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, वी विल प्रोवाइड इट टू यू फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। नॉट
जिन लोगों ने इस साल लिखा है वो तो होंगे ही पास, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट दोज हु आर राइटिंग नेक्स्ट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट देम. ऑलराइट, ओके. सर इफ यू विल टेक दिस क्वेश्चन, साइंस है ना, बच्चे फेल हो जाएंगे मेरा सुनेंगे तो साइंस में. All right. So, question number 51. Which of the following statements regarding the blockchain technology are correct? See, fourth generation technologies, AI, blockchain, right? You must be hearing new terms like compute. Though the term is not new, but the way it is being used is new. Okay. और चैट जीपीटी चलाना एआई का मास्टर होना नहीं है. ठीक है. So the point here is that this is regarding again the blockchain technology. So if you look at the statements, all of these statements were somewhere conceptually must have been taught to you or told to you, or you would have imbibed them while preparing science and tech. Okay. Records stored in the database may be made visible to relevant stakeholder without risk of alteration. See, the whole backbone of blockchain is distributed storage. And in such cases, if you will see, only law enforcement agencies, etc., legal, through legal process only, you can access the data. So that is a correct one. Okay, it is not something that it cannot be made available. Second, copies of the entire database are stored on multiple computers on a network, syncing within second. Not entire databases. That is the idea, the distributed idea. It is not entirely correct. Okay, it is not the entire database that is there. That is the fulcrum. Okay. Third, consortium blockchain is a blend of public and private blockchain allowing selective data access. This is correct. This is correct. For example, right now you must be seeing that a lot of public and private agencies are coming together on blockchain. Okay. How does your government uh, actually operates UPI? It is not using blockchain at the moment, but the idea is that there is limited selective access. Okay, that is there. Mathematical algorithms make it impossible to change or delete any data once recorded and accepted. Why? Why this is so? I mean, if you say this is not correct, how will you modify the data? Okay, so the idea is that statement 1 and 3 are correct. The correct option would be option A. Option A. So next one. ओके सर, शुड वी, मतलब स्टूडेंट्स भी थक गए होंगे, सो आज मतलब वी आर डन 50 क्वेश्चंस, आज के लिए रुक जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक सर? So let us take few more because they ओके, are largely factual. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है. ओके, एन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल. ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल, एक मिनट. Where the seller has यस, control over pricing but doesn't प्राइसिंग keep बट products डजंट in कीप stock. प्रोडक्ट्स. ये एंड amazon इंस्टेड, राइट, amazon राइट, का मॉडल है सर. राइट, राइट. amazon का मॉडल है सब ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग, It's a राइट, term राइट. that probably most of you are Gen Zs. You know this, how this works. Okay, so this was a fairly easy question. राइट. Next one, Second sir. question is also matlab in that same year, but it is more related to It is not term, technical. but it is ha. ठीक है. Which one of the following correctly represents? Which one of the following correctly represents the three sub the three sub indices of financial inclusion index, FI index of Reserve Bank of India? भाई अगर मैं कुछ भी ना करूं ना, कुछ भी ना करूं, just on the basis of what you require from a financial inclusion index, आपको, इफ यू जस्ट इमेजिन क्या चाहिए मुझे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से, ठीक है, you will come to the conclusion कि it will be assess affordability and transparency. Again this is a question from current affairs. Again this is a question from current affairs. बाकी अगर आप देखो, बाकी एबीसी देखो, इन ईच वन ऑफ देम ना एक कोई ऐसा चीज रहेगा जो ऑब्वियसली पार्ट नहीं हो सकता फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के, और इट मे बी टू फार अवे. मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट तो हो सकता है, बट इट इज समथिंग जो प्राइमरी नहीं है. फॉर एग्जांपल ए में पेंशन कवरेज, obviously it is part of financial inclusion, but it is not primary. It is basically not primary.
अगर बी में देखूं तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन, अरे वो मैं क्यों देखूं? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ कंज्यूमर, राइट, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि देश की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा इसमें से. ऑलराइट, सो आंसर विल बी डी, एसेस अफोर्डेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. चलो, let us now move on to let us now move on to All right, I'll take that one. ONDC. Okay. ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. बहुत गवर्नमेंट ज्यादा क्यों करंट अफेयर्स, करेगी? बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स, बट वेरी बहुत ज्यादा सिंपल. बहुत ज्यादा. सिंपल क्यों? बिकॉज भाई इट विल ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पीरियड. बाकी सब, क्योंकि दिस इज नॉट मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, देर आर फोर ऑप्शंस. You have to choose. Why will government get into something in which you have large number of private players? To break the dominance, to provide the alternative. Why is government of India? They are in logistics, for example, in letters post. You have courier companies, right? So as to stop the monopoly. Why is government into banking? Right. So the idea is fairly simple. This was a low catch. Low catch. Next one. Okay, next question is, which one of the following statements about UPI and central bank digital currency, digital rupee, is not correct? They are asking not correct. ठीक है. So UPI के बारे में statement A, UPI is real time payment system, but digital rupee is akin to sovereign paper currency. Obviously UPI पैसा नहीं है, वो जरिया है पैसा भेजने का. डिजिटल रुपी एक्चुअली में पैसा है. Nothing wrong with it. In case of UPI, a settlement for end user happens. In case of UPI, settlement for end user happens instantly as money gets immediately debited or credited. But in case of digital rupee, there is no settlement as wallet balance gets transferred from one to another. ठीक है. UPI transactions are recorded by banks and reflected in bank statement 100%, but in digital rupee, no data is captured in bank statement as transactions are from one wallet to another. ठीक है. Both in case of UPI and digital rupee, the liability lies with user and their respective bank. नहीं भाई, with digital rupee ना, the liability does not lie with the bank as such. All right. So what is not correct? D is not correct. Okay. फिर आते हैं हम लोग, सर एक मिनट. ओके, फिर आते हैं हम लोग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकनाइजेशन आर करेक्ट? ठीक है. टोकनाइजेशन इज अ प्रोसेस of turning real world assets into digital tokens using blockchain technology. blockchain पे दो क्वेश्चंस आगे भाइयों, दो क्वेश्चंस आगे blockchain पे. First statement is correct. Second, tokenization of real world assets offers 24/7 access, promoting financial inclusion. बिल्कुल, tokenization of real world assets will allow access to high growth investments opportunities for high growth investment opportunities for individuals in India. All the three statements are correct. All the three statements are correct. Okay, now let us go to the next question, which was again in current affairs. In fact, ये सबसे easy questions में से एक है. The bond whose proceeds are used only to finance or refinance combination of both environmental and social project is called sustainability bond. It is sustainability bond. ठीक है. Let us look at question number 58. Which of the following statements about M1 exchange role in micro, small and medium enterprises financing is are correct? Okay, M1 exchange provides collateral based loans for MSMEs. देखो, if the government at this point of time is providing loan ना, एक सिंपल उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि वो कोलेटरल बेस्ड नहीं है. इट इज कोलेटरल फ्री. ऑल राइट, इट इज कोलेटरल फ्री. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हैज टू बी रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट, M1 exchange facilitates discounting of invoices and bills of exchange for MSMEs. ठीक है, बेनिफिट एक दे रहा है, तो दिस माइट बी अ केस. थर्ड स्टेटमेंट
M1 exchange functions as credit rating agency for MSMEs. हो ही नहीं सकता. Banks cannot be, मतलब it is like a bank ना, it is basically providing for loans. तो लोन देने वाला एंटिटी खुद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं हो सकता. So 1 and 3 can be eliminated. Your answer is B2 only. Your answer is B2 only. Okay. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. क्राउडिंग आउट इफेक्ट. Crowding out effect. Simple English, crowd out kya karna? For example, many of the IPS officers crowd out promotions in CAPF. Ouch. Okay. So the idea is something saturating a particular space so that the others who require that space are not able to avail it. A simple situation where we can say that government borrowing leads to higher interest rate, which reduces private investment when we look at the crowding out effect from the vantage point of economics. Okay, so the answer is B. Very simple, logical question. Even if you haven't studied economics, just understand. Okay. दूसरी चीज है कि अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जो स्टेटमेंट ज्यादा लंबा होता है ना वही सही हो रहा है. सही सर, जो सर नहीं स्टूडेंट ने सर, बोला था. नहीं सर, ऐसे नहीं सर. नहीं नहीं ठीक है. इससे जा, ये सोच के अगले साल अटेम्प्ट ना करो जो अगले साल एग्जाम दे रहे. इट इज ऑन अ लाइटर नोट. ओके सर, कैन यू प्लीज टेक अप दिस, ये Sure, sir. गवर्नेंस है. Which of the following statements about the rare earth elements and critical minerals are correct? I told you when we were talking about Strait of Hormuz that these things, rare earth, critical minerals, supply chains, all of them have become an area of interest. Okay, so modern technological innovations including AI, robotic, space exploration, space exploration extensively use rare earth elements. Yes, we all are talking about AI is coming, we need large data center, processing center, cooling, and they use rare earths. Okay, China has the highest share in mining of rare earth elements. Now, this is a part, okay, which is problematic. China has the highest share of mining. Most of you, or rather some of you, not most of you, but some of you, इतना पढ़ेंगे and कहेंगे, ये तो सही है. But look at the catch, followed by India. Yes, China has the largest share, but it is not followed by India. So that is making second statement incorrect. Okay. Third one, the government of India launched the National Critical Mineral Mission in 2025 to establish robust framework for self-reliance in critical mineral sector. That is true. Rare earth elements are a set of 13 metallic elements. No, they are 17 metallic elements. Okay. So if you are able to eliminate the second option as the correct one and first one as the second option as the incorrect one, I beg your pardon, and first one as the correct one, then you can play with the options. But all in all, the number of metallic elements was something that was a catch there. Okay, if you remember it, you remember it. If you don't, you don't. So the correct answer would be A, 1 and 3 only. Next one, sir. ओके. 61, sir. Which of the 60, अच्छा, okay, which of the following statements, about insurance in aviation sector is are correct? बहुत important था. After that accident in Ahmedabad, ठीक है, after that accident in Ahmedabad ना, this was in news, this was consistently in news about aviation insurance. The first statement is aviation hull insurance covers physical aircraft including body, engine and onboard equipment. Yes, it does. Second statement is under Montreal Convention adopted in 1999, over 130 countries including India, airlines are strictly liable to pay compensation to the family's nominee of every deceased passenger without requiring
फैमिली टू प्रूव फॉल्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट वी सी इज, यहाँ पे व्हाट वी सी इज द आंसर विल बी सी बोथ 1 and 2. मूविंग ऑन, मूविंग ऑन to question number 62. Now they are asking about crowdfunding. What is crowdfunding? Crowdfunding मतलब बहुत ज्यादा लोगों से ना थोड़े थोड़े पैसे लेना, that is crowdfunding. Crowdfunding is solicitation of funds, small amount, from multiple investors through a web-based platform or social networking site for a specific project. 100% it is correct. This particular statement is correct. ठीक है, अगर यहाँ पे ना only आता through a web-based platform or social networking site only, then that statement would have been incorrect. ठीक है, otherwise now this statement is correct. Second statement, small and medium enterprises are liable to raise funds at lower cost of capital without undergoing rigorous procedure. बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्राउड फंडिंग की वजह से क्या होता है ना, hurdles in taking money, hurdles in receiving money as role or as loan or investments, that are reduced. ठीक है, यहाँ पे भी in this case also the answer will be C, both 1 and 2. Okay, now this particular question is a difficult one. ठीक है, because it is asking you to know history of economics in India, and UPSC was not concerned with it for a very long period of time, my dear friends. UPSC was not concerned with history of economics for a very long period of time. Such questions used to appear before 2009. कि इस कमेटी ने क्या बोला था, उस कमेटी ने क्या बोला था, नाउ दे आर बैक विद सच क्वेश्चंस. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है. ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है. आरएल मल्होत्रा कमेटी, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर्स, बिल्कुल सही है. आईआरडीए, आईआरडीएआई. एलसी गुप्ता कमेटी, preparing roadmap for introduction of derivatives trading in India, absolutely not, absolutely not. Oh, सॉरी, करेक्ट पूछा है ना इन्होंने. ओके, करेक्ट पूछा है, आई थॉट इनकरेक्ट पूछा है. आई एम सो सॉरी, मैंने मिसरीड कर दिया क्वेश्चन को. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट पर्टिकुलर मैच इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज अगेन करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट. आई एम सो सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज मैं खुद हो गया था. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. आर एन मल्होत्रा, आर एन मल्होत्रा कमिटी जो है, इट वर्कड, it worked before IRDAI came into existence. So that cannot be the case at all. That basically cannot be the case at all. Second statement is correct. Third is incorrect. Third is incorrect. Urjit Patel, preparing roadmap for reforming bank lending. Nahi. Urjit Patel committee worked towards strengthening the monetary policy decision making. And fourth is correct. Malegam committee. Malegam committee worked towards reforms in microfinance sectors in India. So the answer is 2 and 4, that is D. Okay. Now coming to question number 64. Now coming to question number 64. Consider the following statements about non-banking financial companies in India. First statement is NBFCs cannot accept demand deposit 100%. That is the difference between NBFC and bank. Bank can accept deposits, demand deposits. NBFCs cannot do it. All NBFCs operating in India have to be registered under RBI compulsorily. sorry, all NBFCs operating in India have to register with RBI, not necessary. Not necessary. Third statement, NBFCs form a part of payment and settlement system and can issue checks drawn upon itself. Absolutely not. NBFCs cannot issue check. Now this is the second difference between banks and NBFC. All right, this is second difference between banks and NBFC. Fourth, deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to depositors of deposit taking NBFCs. बिल्कुल ठीक है. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बेसिकली इज एन एंटिटी विच इंश्योर्स द मनी दैट यू हैव केप्ट इन बैंक. ऑलराइट, तो अगर वो पैसा चोरी होता है या बैंक डूब जाता है, तो देन यू विल गेट दैट मनी बैक. You will get that money back. This is not the same with respect to NBFC. ठीक है, तो आंसर here is 1 and 4. Okay, moving on to the next question. I'll take this one. Okay. So consider the following statements about multidimensional poverty index. Now, the key here is that there are two MPIs.
One is a global one, which is released by OPHI and one more institution, and the other one, of course, the domestic one, is released by the Niti Aayog. So, in my classes on governance, I have extensively talked about the MPI. The question is pretty standard. MPI is calculated using Alkier-Foster methodology. That is correct. MPI is calculated by Niti Aayog, has a total of 12 indicators. That is, if you look, correct. Okay. Uh, then, if you look at this one, maternal health and bank account are common indicators in the MPI of Niti Aayog and MPI of UNDP and OPHI. Okay. Uh, then this is where it, uh, faults. Okay. If you see, the global MPI has 10 indicators. Okay. But they are not the access to bank account, and these are not common indicators. So the question was pretty simple. If you know MPI, key index, okay, indices like MPI, good governance index, etc., these are important. So in that fashion, uh, option number A is the correct option. Moving on to the next one, sir. Okay. Sir, science है, please take it. Which of the following statements with regards to genetic medicine is correct? Now, if you look at genetic medicine, it is somewhat an emerging area where genome sequencing and other things are also related. So, a simple conceptual question which you would have taken up in your science and tech sessions. Okay, uh, genetic medicines are correct. Compensate for the faulty genes responsible for the disease. Correct. Engineered viruses and lipid nanoparticles are used as carriers of the genetic medicine. Correct. Genetic medicines alter the entire DNA sequence. Entire DNA sequence. You understand, altering the entire DNA sequence. Putin can become Trump and Trump can become Putin. So that is something which is probably an extension of a wild imagination. So the correct answer to this would be option C, a low hanging fruit. Next one, sir. Okay. Which of the following statements? The question is basically on LLMs. LLMs, large ठीक है. language models, This Claude. is again a question जो आराम से solve किया जा सकता है. Reason for Right. that is look at statement 3. LLMs produce unbiased output. अब तक हम लोग पहुंचे नहीं उस टेक्नोलॉजी पे. ठीक है. बस देखो पहले दो मोदी जी ने भी स्टेटमेंट कहा है था ना. मोदी राइट. जी ने भी कहा था कि राइट हैंड, ज्यादातर राइट हैंड वालों का पॉइंट ऑफ व्यू देता है, खब्बुओं का नहीं देता, लेफ्ट हैंड वालों का नहीं देता. सिंपल, ठीक है. अनबायस्ड आउटपुट नहीं है. Right, right, right. So 3 the is answer wrong. has to be the answer 3 is wrong. The answer therefore has to be 1 and 2. The same goes basically with the next question. 68 questions के साथ भी ना 68 नंबर क्वेश्चन के साथ भी ऐसा ही है. अब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और स्टेटमेंट 3 देखो. स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद मेटा मटेरियल्स टू इंक्रीज सैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हो ही नहीं Ra- सकता. rather they absorb. राइट. दे हैव टू अब्सॉर्ब. अगर छुपचाप छुप के जाना है तो एब्सॉर्ब करना पड़ेगा ना. स्कैटर कैसे करेंगे? ऑल राइट. तो यहाँ पे भी द आंसर हैज टू बी सी 1 and 2. ओके. Let us look at question number 69. Black boxes. Yes. Okay, so ideally, let me give some insight on this. This black box is not in black in color. Okay, this is Right. red in color, so that if a plane has crashed, it can be easily spotted by eyes. Okay, because brightening red, orangish red color hota hai iska. All right, and it is officially called as a flight data recorder, which records all the flight communication between the pilots and the ATC and amongst the pilot. एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, ब्लैक बॉक्स लोकेट हुआ था, ये सारी चीजें आप न्यूज में आपने देखी होंगी. दे कैरी अ बीकन इमिटिंग रेड लाइट पल्सेस टू फैसिलिटेट अंडर वाटर डिटेक्शन. सी, if you look at black boxes, they do not carry such a beacon. Okay, they do not carry. They record both the cockpit voice and flight data. That is correct. Their memory units are made using either stainless steel or titanium. That is also correct. So the correct answer is option B. Option B. For those of you who have not watched, पता नहीं आप लोग सीरीज देखते रहते हो, फ्लाइट क्रैश इन्वेस्टिगेशंस देखो यूट्यूब पे या डिस्कवरी पे. There you'll get the idea what is the black box. Right, next one, sir.
ओके, नाउ दिस अगेन इज अ इजी क्वेश्चन, अगर देखा जाएगा तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. इफ यू लुक एट स्टेटमेंट नंबर 1, वो पूछ रहे हैं अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन. स्टेटमेंट नंबर 1 इज इट इज decarbonized hydrogen obtained from natural gas reforming combined with carbon captured and storage. दिस इज ब्लू हाइड्रोजन. ये जो डेफिनेशन दिया है ना, ये ब्लू हाइड्रोजन का डेफिनेशन दिया है, ग्रीन हाइड्रोजन का नहीं दिया है. रेस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर क्वाइट इजी. देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में तो पता ही होना चाहिए. इफ यू एस्पायर टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया. और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना, इन विच एन टेक्नोलॉजी हैज नॉट फुल्ली डेवलप्ड एंड इंडिया हैज ऑलरेडी पुश्ड इटसेल्फ इनटू इट. तो इट इज वन ऑफ दोज रेयर प्रोजेक्ट्स. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज, टेक्नोलॉजी कोई और डेवलप करता है, इंडिया उसको असिस्ट करता है. यहाँ पे वी आर टेकिंग द लीड थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. सेकेंड स्टेटमेंट ऑब्वियसली इससे ज्यादा क्या ही सही होगा यार. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. रेस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Rest of the two statements are correct. Okay. Again, Consider this the is following something, statements. हाँ, बोलिए सर. right? I'm taking this up, sir. Okay. So this is something that we had in news. Skyroot, Agnicool, all of these companies have been in news. Now the idea is, what about the statements and the content of it? It is not something that when you look at Agnicool Cosmos or Skyroot Aerospace, you are encountering something that is written in Greek and Latin. Okay, the in space is an autonomous agency formed to facilitate participation of private entities. That is correct. Agnicool Cosmos launched the world's first flight using 3D printed rocket engine. Again, this is correct. Okay, if you look at the third statement, that Skyroot Aerospace has developed liquid fuel for GSLV. No, sir. It is not part of the GSLV program, that you should know. Skyroot Aerospace is developing its own series of launch vehicles. Okay. So this was an easy catch. Third statement is incorrect. First and second are correct. The correct answer is option C. Option C. Next one, sir. सर ये भी प्लीज टेक इट अप. Okay, थोड़ा सा मेरे. which of the following statements with regards to drone swarms is or are correct? Drone swarms is something which Pakistanis tried to, not exactly swarms, but tried to saturate. The idea of drone swarms is the seed operations, suppression of enemy air defenses, right? Basically, to saturate the adversaries' air defense capabilities like a swarm, just like you have the swarm of the bees. They use terahertz band of frequency to communicate with the command center. If you look at this particular statement, no, I mean, there are variety of frequencies that are used, not just teraband, so as to avoid jamming or electronic countermeasures, okay, which probably India used very successfully during Op Sindoor, and that is why none of the Kanglu drones could actually target anything in India. Right. Next is individual drones in the swarm can communicate with the other drones in the swarm. That's precisely the idea. If they are blind to each other, they are going to crash into each other. Okay. GPS spoofing is a commonly used technique to counter the drone swarm attack. Yes, you use GPS spoofing as a part of the ECM, that is the electronic countermeasures, where you confuse their navigation systems, right, and thereby denying them the desired effect that they want to have. So we have the second and the third statement as the correct one. The correct answer is option B. B for ball. Next one, sir. Okay. Which of the following statements, एक minute, which of the following statements regarding in German project is are correct? It is part of human genome project. No, it is not part of human genome project. जो original human genome project था ना, मुझे लग रहा है कि वो बहुत मतलब it was way back when I was attempting. ठीक है, so it is not part of that. The project is funded by Department of Biotechnology, Government of India. Yes, it is. Its primary aim is to build catalog of genetic diversity of Indian population. बिल्कुल सही है. So what we see is the answer is B, 2 and 3.
ये क्वेश्चन मैंने बोला था, ये मैंने बोला था कि इस साल जरूर आएगा, नेशनल क्वांटम मिशन। ऑल राइट, एंड यू हैड टू नो अगेन व्हाट दे हैव आस्क्ड इज बेसिक इन्फॉर्मेशन। एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी है, जो इनिशियल पैराग्राफ्स में ही आपको मिल जाएगा किसी भी न्यूज आर्टिकल के। It aims to develop intermediate scale quantum computers with 50 to 1000 physical qubits. Second statement is its implementation includes setting up of 4 thematic hubs, T hubs, in academic and national R&D institutes across India. बिल्कुल सही है. The answer is both 1 and 2. C. Both 1 and 2. Okay. Coming to the next question, and this is about Deep Ocean Mission. It is launched by Ministry of Port. No, it is not launched by Ministry of Ports. Okay, it is not launched by Ministry of Ports. Second, Matsya 6000 has been designated to carry 3 people for deep ship exploration. बिल्कुल सही है. Samudrayan is a project under this mission. Both of the statements are correct. So the answer is B. 2 and 3 only. Answer is B. 2 and 3 only. Let us go to सर, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस है विच आई वांट यू टू टेक अप बिकॉज दे आर डीलिंग विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो आप जरा इसको देख लीजिए। मुझे लग रहा है आगे 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं, Right, right, right. तो आई वांट यू टू डील विद देम, आप देख लीजिए। These are the questions. First of all, I'm glad that PubAd has somehow now crept into the prelims as well. Okay, because like I say, always this is an exam. See, uh, even if you are a good flyer, what you are going to do on a submarine? Okay, a good pilot is not required in the submarine. He is required on an aircraft. This examination is actually asking you to become an administrator. So this is something important. A case study kind of a format has been given. Mr. X, a senior officer, was overseeing a critical vaccination program during a pandemic. He found that a private service provider responsible for vaccine distribution was compromising on quality to make profits. Despite immense pressure to manage the issue due to vested interests, he raised his voice based on the principles of public administration, which he learned during the various training programs attended across his career. He reported the issue to the appropriate vigilance authorities and halted the contract to ensure citizens' welfare. Which one of the following principles of public administration was strongly demonstrated by Mr. X's actions? Now, if you look at this, you did not require public administration. This is something that gets covered in governance and ethics. Okay, as well. But if you know public administration, that's an added advantage, because in a jiffy you can spot that we are talking about accountability. He wants the responsibility and accountability to be fixed. It is not about equity, esprit de corps, or delegation. Okay, so this is something which is a very straightforward question. Even if you look at from the tenets of governance, CATPIR, okay, consensus orientation, accountability, transparency, uh, participation, equity and inclusivity, efficiency and effectiveness, responsibility, rule of law. Okay, the tenets of good governance. So you will understand that this is talking about the accountability. Now, let me talk about it more. Let me share my screen since Viraj sir is off the camera. Right. So, यस सर, बताइए। all right, you are back. Okay. So, okay. Next question, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Question number 77. Again, a case study kind of a question. In a multi ethnic district where both economic, just a second, right. In a multi ethnic district where both economic competition and historical grievances frequently led to community tension. Okay, so community tension hai.
A flashpoint has arisen with the government decision to allocate land for waste management. Waste management के लिए land चाहिए tribal hamlet में, sparking protest by tribal community which claimed that the land was sacred. Okay, tribal population had a sacred land and critical to their cultural identity. At the same time, urban residents and local industries supported the project, citing severe solid waste challenges and health concerns due to the lack of proper disposal site. The conflict has escalated with road blockades, social media campaigns, and allegations of police excesses. As a responsible government official, you are tasked with resolving the situation through mediation, ensuring a sustainable outcome that balances environmental needs, tribal rights, and urban public health. So, ethics, okay? Ethics is like administration, friends. More often than not, it puts you in the shoes of an administrator. Okay, so you are given a series of actions what you are going to do. A successful conflict resolution process must begin with acknowledging of the cultural concerns of the protesting tribal community before discussing technical alternatives. That is correct. Remember Mary Parker Foley that we study in public administration, the integration technique. Okay, the government should move ahead with the project without delay to address the urban health concerns which outweigh the sentiments of the small group. No, we are not going to do that. Okay, India is a democracy. We cannot actually just do what the majority pleases. Okay, the governments form in a democracy by majority, but they are not majoritarian in their conduct. Creating a multi-stakeholder dialogue platform including tribal leaders, environmental experts, and municipal representatives to build mutual understanding and help de-escalate the tensions. That is a correct way. Conducting an independent environmental and social impact assessment, ESIA, you all are familiar with that, and sharing findings transparently with both sides to facilitates evidence-based decision making. That's more rational. Okay, so if we see, the second step seems to be the but extreme, whereas 1, 3, and 4 are more towards consensus building. Okay, so in that manner, if you see, this works. Okay, so correct option will be option A. Option A. Next one, sir. Next question. Sir, Aya. Ah, yeah. Okay. Okay, so again, you are put in the shoes of a civil servant. Mr. X is a mid-level civil service official working in urban development department of a major city. Miss X, female. Okay, remember. Recently, she was involved in approving a contract for public infrastructure project, a new community park. During the approval process, she received a piece of the confidential information indicating that one of the shortlisted contractors has a history of poor workmanship and allegations of corruption in other cities, though nothing had been legally proven. The head of the department, Mr. Y, advised her not to disclose this information to the project committee or to the public because it could delay the project and damage the city's reputation. However, Ms. X believed that withholding such an information compromised transparency and public trust. What amongst the following should Ms. X do now? Immediately disclose the information. Recommend removing the contractor from the shortlist to protect the project's integrity. Well, such an action in terms of recommending the complete, you know, removal of the contractor, because nothing is proven. So you cannot punish just based on the perception. At the same time, you cannot really raise the alarm bells because the process is underway. So 1 and 2 are not likely. I mean, out of 1 and 2, one is something that I would say, okay, we'll think about it. 3. Propose a limited disclosure to an oversight committee while keeping information confidential from the public for the time being. Now, this is coming across as a balanced argument. If tomorrow that person ends up being corrupt, the contractor in discussion, at least she has ensured that it is noted, the concerns were noted. At the same time, a public welfare project is not being held back because of a mere suspicion. So 3 seems to be the most balanced outcome. Therefore, the answer would be option B. Option
B. Also, we could have considered 1 and 3, but 1 and 3 is not an option. All right. Next one, please. So, next one. Okay. X was addressing a seminar when the meaning of the term law was provided under Article 13, Part 3 of the Constitution of India. X explained that the meaning of the term law in the Constitution of India was very comprehensive. It included ordinary law, ordinances, orders, and even rules and regulations. Why I pointed out that the term law in Article 13 also included custom, usage, or having the territory of India the force of law, to which X was not convinced. Based on the above, select the correct alternative. Now both are correct, right? From the law of from the logic of administrative law, we talk about the various systems, the common law systems, and the substantive idea of law. So a little bit of administrative law getting borrowed there. Technically, I would request Viraj sir, because he's the expert on if polity, we to take shed into some light. if we take into consideration केशवानंद भारती केस ना, तो Right. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 मींस ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, rules and regulations, and also customs and usages. Also, Supreme Court stated in Keshavananda Bharati, it does not include constitutional amendments. तो केशवानंद भारती केस है ना, it specifically mentions this particular things. All right. तो सर इज जो सर ने आंसर दिया बिल्कुल सही है. इट इज सी. इट इज सी. बोथ दोनों सही है, दोनों सही है. ऑल राइट. एंड दिस वाज बेसिकली द आर्ग्यूमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट. दिस वाज बेसिकली द डिसएग्रीमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट कि टर्म लॉ के अंदर क्या क्या आता है. तो ये सारी चीजें आती है, बस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. fairly easy question. Consider the following statements. There is no article in the constitution that states that the Constitution of India will be officially called the Constitution of India. Absolutely not. ऐसा statement जब भी आता है ना, that statement is almost in that statement mostly is incorrect. That statement mostly is incorrect. All right. So first statement is incorrect. Second statement, there is no article in the Constitution that specifies that Indian Independence Act 1947 and Government of India Act 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैंड्स रिपील. ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिप्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बोथ. ठीक है. एंड इन सम केसेस आल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इट हैज टू बी स्टेटेड कि वो एक्ट खत्म हो गया, अब ये शुरू होगा. इट हैज टू बी स्टेटेड एंड दैट इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज बेसिकली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज there is no article in the constitution that mentions 26 January 1950 as the date of commencement of the constitution. Again, this cannot happen. If you are implementing a particular law from a particular date, then the law has to contain that date. Okay? And the required articles are, for statement 1 na, the concerned article is article 393. For the second statement, concerned article is article 395, and for the third statement, the concerned article is article 394. Okay. So in this particular question, what we see is no statement is correct. All right, no statement is correct. Hence the answer will be B. Moving on to the next question. ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है यार. मतलब this question really, what it does is it makes you rethink about your strategy in examination. All right. अब इस स्टेटमेंट में जो पहला, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इट मेंशन 2018 टू बी द ईयर इन विच द एक्ट वाज इनेक्टेड. ठीक है. पहले सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेनेवर दे यूज्ड टू कम ना, पहले फर्स्ट थिंग तो इट वाज नॉट नॉर्मल टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड व्हेनेवर सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आते थे क्वेश्चन में, इन दोस दिस स्टेटमेंट्स ना, दे वर कंसीडर्ड टू बी करेक्ट. ये स्टेटमेंट गलत है. Because rights of persons with disabilities act, it was enacted in 2016, not in 2008.
All right, second statement is correct. Second statement is correct. Third statement is incorrect. Third statement is incorrect. All right. So, National Divyangjan Finance and Development Corporation works under Department of Empowerment and not under Ministry of Finance. It works under Department of Empowerment, under Ministry of Social Justice, and not under Ministry of Corporate Affairs. Obviously, this particular statement was easy to decipher. Okay, but first statement is also incorrect. So what we see is statement number 2 being the only correct option, only correct statement, and the answer is B. All right, moving on to question number 82. Moving on to question number 82. Consider the following statements. Consider the following statements about provisions pertaining to scheduled caste and scheduled tribes in India. The first statement is provisions regarding the administration of tribal areas in state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram are given in fifth schedule of the constitution. अरे एकदम easy है ये, एकदम easy है. They are not in fifth schedule, they are in sixth schedule. तो एक statement तो गलत है. Some tribes in India are entitled for exemption from paying income tax on certain incomes. देखो जब भी ये word sum आता है ना in any statement, that statement is correct because there are always exceptions. तो sum मतलब exception की बात कर रहे हैं. This is correct. The Constitution of India provides for reservations of seats in panchayat for women belonging to scheduled caste and scheduled tribes. Yes, for women in panchayat at panchayat level, na, there is reservation within reservation. So there will be seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes, and within those reserved seats, there will be seats reserved for women from those categories. So two statements are correct and one statement is incorrect. Two statements are correct and one statement is incorrect. Okay, so our answer will be our answer will be A. Our answer will be A. Okay, moving on. Consider the following with respect to questions asked by members of parliament in India. First statement, unstarred questions are those to which ministers desires to answer. Minister desires to answer. Desires an oral answer in the house. बिल्कुल गलत है. It is starred question. Starred question पे there is oral answer. Unstarred पे नहीं. ठीक है. And starred question also provides for what you can say supplementary question. Unstarred questions में supplementary question नहीं हो सकता. So first statement is incorrect. Starred questions are those in which minister desires a written answer. नहीं बाबा. A member desires a written answer. नहीं बाबा, ये दोनों ना opposite कर दिए गए. Unstarred question is written, starred question is oral. Okay, third statement, no supplementary question can be asked on an unstarred question. बिल्कुल. When it is a written reply given by a minister, written reply पे आप supplementary question नहीं पूछ सकते. So statement number 3 is correct. Statement number 3 is correct. First and second statements are incorrect. So यहाँ पे the answer will be C. There is only one correct statement. All right, moving on now to question number 84. Consider the following statements about Committee on Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes of Parliament of India. Okay. First statement, although members of this committee are elected from both the houses, the chairman of the committee is appointed by chairman of Rajya Sabha. बिल्कुल गलत है ये. ठीक है. It is not the case. It basically is not the case. All right. Chairman of the committee is appointed by Speaker of Lok Sabha, not the chairman of Rajya Sabha. Next, 20 members are elected from Rajya Sabha and 10 from Lok Sabha. Logically also it cannot be correct because Lok Sabha is a bigger house in terms of numbers. So obviously more members will come from Lok Sabha. No minister except Minister of Social Justice and Empowerment is eligible to become the member. This again is incorrect. हो ही नहीं सकता कोई मिनिस्टर मेंबर. एक्सेप्शन भी अलाउड नहीं है. All right, fourth statement, members are elected for fixed term of 2 years from the date of entering the office. Every
committee of parliament na, it is for the term of 1 year, not 2 years. Every committee, PAC, estimate committee, any other committee also. All right. So यहाँ पे what we see is D is the answer. There is no correct statement. There is no correct statement. Then we come to question on Sudarshan Chakra, Mission Sudarshan Chakra. Sudarshan I'll take Chakra that is up. basically defense. Okay, sir. So, defense is somewhat my area of interest. Not that Viraj sir does not have an interest, but I have more interest. So, the point is, Mission Sudarshan Chakra. It was in news, especially after the splendid performance of India's air defense during Op Sindoor. Okay. It aims to enhance India's air defense, ballistic missile defense, and aerial offensive capabilities. That is correct. The mission is being designed to enhance rapid, precise, and powerful defense responses, reinforcing India's strategic autonomy. So this was identified with with Mission Sudarshan Chakra. Both two are derived derivative statements, which are talking on broad areas. Both of them are correct. Third one of the aims of the mission is to cover all public places of India by an expanded nationwide security shield by 2035. That is what is incorrect. We are talking about not all public places, but critical infrastructure, crucial cities, critical infrastructure. So this statement, if you look, is incorrect. The correct answer, therefore, would be option B. Option B. B for ball. 1 and 2. Next one, sir. Okay. Consider the following statements. Maitru Setu, built over Feni River, connects Ramgarh in India with Sabrum in Bangladesh. Actually, है ना दोनों जगहों को interchange किया with the country. Ramgarh is in Bangladesh and Sabrum is in India. All right, the first statement is incorrect. Julaghat suspension bridge connects India and Myanmar. No, it connects India and Nepal. And both this, मतलब ये तीनों भी bridges है ना, they were in recent current affairs. All right. So you needed to know. तो ऐसा नहीं कि current affairs पूछा ही नहीं है भाई, भर भर के पूछा है current affairs. All right. I was seeing some comments कि current affairs पूछा ही नहीं है. अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है. Mechi bridge and its approaches connects Panitaki Panitanki bypass in India with Kakarvita in Nepal. Which of the statements are correct? Only 3. D is the only statement that is correct. D is the only statement that is correct. Okay, moving on. Next question is with respect to zero FIR from the point of view of BNSS. What is zero FIR? Because zero FIR basically is the one in which a police officer comes to know about a crime being basically taking place, though the crime is outside his territorial jurisdiction. उसके police station के jurisdiction के बाहर है, but he knows that the crime has happened, so he will write a zero FIR, and then the FIR will be transferred to the concerned police station. All right. So first statement, a zero FIR can be launched at a police station even though the place of commission of cognizable, non-cognizable offense is outside the territorial jurisdiction of the police station. This statement is incorrect only because it includes both cognizable and non-cognizable offense. ठीक है? Zero FIR is concerned only with cognizable offense, not with non-cognizable offense. ठीक है? Cognizable offenses are those in which settlement नहीं हो सकता between victim and the those and the person who has committed the crime. Okay, second statement, officer in charge of the police station where a zero FIR has been launched with the permission of the competent authority can initiate preliminary inquiry. Yes, ठीक है, FIR हो चुका है तो investigation शुरू होगा. Third statement, under zero FIR it is obligatory for informant to furnish information electronically. Not at all. Not at all. Many areas in India, many police stations are in India are electronically not even connected. ऐसा कैसे हो सकता है? That cannot be the case. The answer is therefore D, 2 only. Moving on to the next question. Okay. So यहाँ पे ना what has been done is some organization, their functions
and the ministries that are concerned with, they are provided, and we have to basically see which are correctly matched, which of them are correctly matched, or how many of them are correctly matched. So if we look into it, so first, Central Economic Intelligence Bureau. Central Economic Intelligence Bureau is associated with Finance Ministry, not with Home Ministry. So first is incorrect. First row is incorrect. Second row, Serious Fraud Investigation Office. So it will look into it will look into complex corporate frauds. But again, the ministry is not of finance, ministry is of corporate affairs. Okay, and then we have Central Bureau of Investigation, CBI. Okay, preserve public life and ensure health of national economy. Okay, CBI was mainly concerned with, CBI when it was established, it was mainly concerned with economic offenses. यहाँ पे है Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension. Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension. This is correct. So how many rows have been correctly matched? Only one. Question number 89. Let us look into it. Question 89 में there is some issue with respect to the answer. So we'll come back to you. Don't worry. ठीक है. According to us, the given, हाँ sir, बताइए. Sir, I would like to add on this that question 89 seems an incorrect question, as in the options are not correct. Right. So Options given are not correct. Right, sir. right. So if you look at the first statement, Employment Policy Convention, India has ratified it. Okay. Abolition of Forced Labor Convention, India has ratified it. Right. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, India has not ratified it. India has not ratified it. ठीक है. तभी हम बांग्लादेशियों को वापस भेज रहे हैं. ओके. Even Rohingyas जो है, Rohingyas and all we are that. not giving them rights of migrants. Right. Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in the time of war, India has ratified it. Okay. Fifth one, Convention on Reduction of Statelessness, India has not ratified it. So if you look at 3 and 5, India has not ratified it, but 3 and 5 are not amongst the option. Right, sir. Right. Okay, so therefore this question is marked as asterisk. Probably UPSC will come up with greater clarification, but the question is strictly factual. Okay, and as far as our research goes, we could not find supporting anything 3, 4, and 5. Option D. Okay, so that makes this question doubtful. Okay, we are openly saying that. Next question, sir. Okay. Next question. Now this is about AI Summit, which took place in 2026. So it is quite a recent current affair. Consider the following statement regarding AI Summit 2026 held in New Delhi. The summit's intellectual framework was based on 3 foundational sutras: people, planning, and progress. नहीं हो सकता यार planning. It is planet. Planning नहीं हो सकता. It is planet. ठीक है. वो दिखने में भी अजीब लगता है, पीपल, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस. भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब एक साथ आती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जब एक साथ आती है, तो इट विल समथिंग रिलेटेड टू द ग्लोब ना, तो ये हो नहीं सकता. सेकंड स्टेटमेंट, the preamble of the summit stressed democratizing AI resources, which acknowledge the charter of democratic diffusion of AI as a binding framework to support. बाइंडिंग आ गया. एनी इंटरनेशनल समिट जिसमें बाइंडिंग आ जाता है ना, दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है. एज अ बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू सपोर्ट लोकली रेलेवेंट इनोवेशंस एंड स्ट्रेंथन resilient AI ecosystem while respecting national laws. Third statement, the New Delhi Declaration on AI impact was structured among on 7 chakras pillars, which included assess for social empowerment, AI for science, and secure and trusted AI. Third statement is correct. Therefore, our answer is D. Okay. Moving on to the next question. Question number 91.
ये तो बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, इसको करंट अफेयर्स भी क्या बोलूं सर, ये तो मुझे लग रहा है हमारे टाइम से चला आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स में अपने टाइम पे पढ़ता था। राइट ओके। सर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following connectivity projects is are part of cooperation between India and ASEAN member countries? uh, Kaladan multimodal transit transport project, IMT trilateral highway, agartala अखोरवा रेल लाइन, तीसरा वाला जो है ना, दैट कम्स अंडर बिम्स्टेक, दैट कम्स अंडर बिम्स्टेक, इट डज नॉट कम अंडर आसियान। इंडिया आसियान। इंडिया और आसियान के बीच में वो नहीं आता है, वो बिम्स्टेक का प्रोजेक्ट है। एंड सेकेंड थिंग इज ये जो प्रोजेक्ट है इट इज विद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। ठीक है, तो आंसर हियर विल बी 1 and 2। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। सो प्रोजेक्ट्स है, मेनली दिस आर द प्रोजेक्ट्स ना जो इंडिया सपोर्ट कर रही है, मेनली नहीं, दिस आर द प्रोजेक्ट्स दैट इंडिया इज सपोर्टिंग। तो यहाँ पे ए इज ए इज कनेक्टेड टू भूटान, रिस्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस, इट इज कनेक्टेड टू अफगानिस्तान विच वी डिड। उसके बाद में हम लोग वहां से बाहर निकल गए बिकॉज ऑफ तालिबान। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट डिकोया, that is connected to Sri Lanka. Institute of Security and Law Enforcement Studies, D, that is connected to Maldives. So answer will be B. Answer is B. Okay, sir, weapons. All right. Which of the following items of defense hardware is or are manufactured in India? Su-30 MKI fighter jets. Of course, they are, made by under license by HAL, Hindustan Aeronautics Limited. T-90 Mark III tanks. Now, when it comes to Mark III, recently, if you will see, the 1000th T-90 came off the production line. Akula class submarine is a Russian submarine which India leased. It's a nuclear submarine, SSN, means ship submersible nuclear. It is not an SSBN, that is ship submersible ballistic nuclear that carries ballistic missiles, which our Aryant class is our SSBN, completing our nuclear triad and Ardiman and the following ones. So 1 and 2 are manufactured in India. Su-30 MKI fighter aircraft, they performed splendidly well during Op Sindoor, hammering the Pakistani air bases with BrahMos missiles. Okay, and T-90 Mark III tanks, which are manufactured in India. In India, it is known as T-90 Bhishma. Okay, so 1 and 2, option A. Correct. Okay, moving on to the next question. Next question is with respect to international cooperation. Lot of questions from IR this year. Consider the following statement about platforms for multilateral cooperation. Colombo process is a regional consultative process in which member states take binding decision by consensus. Again, binding, जहाँ पे भी international organizations में या international summits में ये word आता है ना binding, mostly that particular statement is incorrect. Second, the Abu Dhabi Dialogue is a voluntary non-binding consultative process among Asian countries of labor origin and destination to facilitate regional cooperation on contractual labor mobility, 100%. Third statement, the Global Forum for Migration and Development created upon the proposal of former UN General Secretary is a voluntary forum whose decisions are not binding. देखो दोनों non binding वाला statements है ना, they are correct. All right, they are basically correct और answer will be C, 2 and 3. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए इजी है, बट most students will not find it to be easy because this was the current affairs during the time in which I was preparing for the examination or close to that period. ठीक है, the question is which of the following, consider the following UN organization: World Food Program, United Nations Children's Fund, United Nations High Commission for Refugees, and International Labour Organizations. How many of the above
have been awarded Nobel Prize twice. तो इसका आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. तो इसका आंसर है, नहीं नहीं सॉरी, नॉट, इट इज नॉट वर्ल्ड फूड, इट इज नॉट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इट इज यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज. ऑलराइट. सो दो बार इनको नोबेल प्राइज मिला है, इन 54 एंड इन 81. ऑलराइट, अगेन दिस इज नॉट द टाइप ऑफ करंट अफेयर्स दैट यूपीएससी, मतलब दिस इज नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम यूपीएससी, बट ठीक है. तो हाउ मेनी पूछा है ना, तो आंसर विल बी ए 1. ओके, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. This was a question that had to be left. I दिस mean, वाज द क्वेश्चन दैट not on earth. I mean, I doubt even Shashi Tharoor remembers the dates of of राइट. of the periods in which it was in operation. One can remember one of the recent ones, and more so, it is difficult. Why? Because they are given in abbreviated form. राइट 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 राइट. Okay, so that makes this question very difficult. The correct answer is based on research. I can tell you it is B. It राइट. is B. Very simple. Nothing logical about it. We can move to the next question, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर और लेस यू नीडेड टू नो द आंसर अपॉन इट. मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीमस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट ईयर कॉल्ड इट द मोस्ट रेलेवेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. क्योंकि ऑलराइट. सार्क डी एम्फोसाइज हम कर रहे हैं हाँ. बिकॉज हाँ. यू हैव द greatest field marshal at the helm of Pakistan. हम्म. So the point is we are de-emphasizing Pakistan, and therefore SARC has lost the salience in हम्म. India's cooperation calculus, and राइट. BIMSTEC, which avoids Pakistan and includes practically every SARC other SARC nation, राइट. राइट. has become the fulcrum of India's neighborhood policy. So राइट. राइट. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो बीमस्टेक, तो जो बीमस्टेक कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी है ना, दैट इज लोकेटेड इन टिम्पू. ऑलराइट, टिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान. BIMSTEC Energy Center is located in Bengaluru. BIMSTEC Center for Weather and Climate, it is located in Noida. And BIMSTEC Technology Transfer Facility, it is located in Colombo, Sri Lanka. All right, so the answer is C. Answer is C. Again, the question that in a way is difficult. it is very difficult if you do not know. So it is written as corpse, हाँ. but when we speak, it is called as core. हम्म. Okay, so there are multiple corps in the army, which हम्म. are headquarters at various places. Some are defensive, some are offensive corps. हम्म. Okay, so it is a very factual question. The idea is that if you have been following the Jammu and Kashmir, rest of the three are correct. हम्म. Okay, if you are following Jammu and Kashmir, 33 core and northeastern region, 33 core is not in Srinagar. It is in Siliguri, Sukma, West Bengal. Okay, Right. Right. Srinagar is associated with 15 core. Why am I saying this? Because more often when you hear the news of some Infiltration. clashes along LOC or infiltration or some counter terror operations, it is the 14th core and 15th core that comes into the picture, because 14th core is HQ'd at Leh, which is practically looking at the China frontier in the Jammu and Kashmir region, Jammu Kashmir Ladakh region. Okay, and 15th core is looking at the LOC. Okay, Tezpur, fourth core, again, we are looking at the China frontier. Third core, again, Dimapur. So the Right. correct option is, which is not correctly matched, is 33rd core in Srinagar. It is not in Srinagar, it is in Siliguri. Right. Sir, please take up this question. Governance. Which of the following statements with respect to revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA are correct? The period of its implementation is 1st of April 2021 to 31st of March 2026. If you recall, on my policy and programs brief, I told you the Right, sir. schemes which are ending, which are beginning, and which are getting extended. Okay, it is incorrect. Okay, it is incorrect. So it was approved for 2025 to 2026, not from 1st of April to 31st of March. Okay,
So implementation period is 2022, 23 to 2025, 26. So the end is practically not incorrect. The beginning is incorrect. Okay. So that's a unique case which makes the first statement as incorrect. Second statement. The key objective of the revamped RGSA is to develop the governance capabilities of the PRIs to deliver on the SDGs. That is correct. The share of the central funding of the revamped RGSA is 100% for all the states and union territory. More often than not, it is not the case. It is 60-40 or 90-10. Remember, I told you funding is something that can confuse you. So this is again incorrect. You have only the second statement as the correct one. Therefore, the answer is B for ball. Option B. ठीक है. Going to the last question of the day. So they are asking which of the following countries are members of EU. देखो, Belarus cannot be the member of EU. If you are रशिया के साथ है. if you are if you are seeing the war between Ukraine रशिया and एंड यूक्रेन. तो बेलारूस तो यार अलाय है रशिया का. So a country that is ally of Russia, how can it be part of European Union? First is not correct. So obviously A and B will get eliminated. उसके बाद में the question is whether you choose Germany or Switzerland. Obviously यार जर्मनी को ही चूज करोगे. जब भी EU के बारे में you read about Germany. Germany you can say is informal leader of EU. All right. So the answer has to be C, 2 and 3. All right. So I believe, sir, you can stop sharing the screen. We are done with this paper. Right. You can stop sharing the screen, sir. Yes, I have stopped sharing this. Okay. All right, friends. So I hope you would have enjoyed this session as much as we did bringing it to you. Right. There was a lot of hard work which went by from Viraj sir's side, especially because since he's our GS program head and he looks after GS for us in a substantive way. Uh, Still, we have kept a session tomorrow, right, to give you personalized guidance. The link for that has been shared in the description and through the chat as well throughout this session by the team. So, I thank you all on behalf of myself and Viraj sir. More reflections on paper. If there are any, if you would like to discuss, you can get in touch with us through our various platforms, right? Through our website and through the helpline number that is given to you. Just drop in the WhatsApp and we'll connect. Plenty of exciting courses are coming up for GS and public administration optional, both for 2026 means writing students as well as for those who by any chance of whisker end up missing the 2026. So myself, Viraj sir, and the entire team at IS Pass will be geared to give our best to assist you, to help you, to steward you towards realizing your goal. As they say, this it is not the end, it is just the beginning, Hmm. right? It is not even I would like to quote Winston Churchill, it is not the end, it is not even the beginning of the end, but it is the end of the beginning, right? And uh, just like our motto is there, IS pass, your pass to enter IS. So do connect with us. Any queries that you have, do put it in the comment section and we'll reply to that, right? Any final words from Viraj sir? Viraj sir. चिल करो भाई और बहनों. ठीक है. एक दो दिन मतलब आज के दिन कल दोपहर तक चिल आउट करो. ठीक है. एंड देन फ्रॉम टुमारो देन यू विल हैव टू स्टार्ट स्लॉगिंग अगेन फ्रॉम टुमारो इवनिंग. अगर हम लोग टाइम देखे बिटवीन नाउ एंड मेंस ना बहुत कम टाइम है. सो यू कैन नॉट एफर्ट टू टेक रेस्ट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स. तो मुझे नहीं लगता है कि कल शाम के आगे आपको रेस्ट करना चाहिए. कल शाम से तो शुरू करनी ही पड़ेगी पढ़ाई. आपको एटलीस्ट Right. प्लानिंग प्रॉपर शुरू करना ही पड़ेगा. Right. All right then. Bye bye. Take care. All the And best. one more thing, just one more thing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The way in which paper was created, na, everyone is in the ring right now. ठीक है. तो आपका स्कोर जो भी हो, don't get disheartened. सब लोग रिंग में है. Right. Right. Thank you. Thank you so much. Okay, चलो, bye. Bye.